I, Dr. Nivedita, welcome you all in this webinar. Before we begin the session, I would like to give a very brief introduction about the relevance of today's webinar. See, the objective is to make students understand the importance of voice modulation. Why? Because what one speaks and how one speaks has huge impact in terms of how the listeners perceive and put the attention on whatever has been said. The right content along with the right way of delivery is the key mantra of public speaking or for that matter any type of speaking. Voice modulation is a process to control one's voice, to put emotions in the words, and to create a scene and mark in the thought process of listeners. It is controlling or adjusting one's voice and tone to communicate the message more effectively. We have among us some eminent speakers today who are going to throw some light on the particular subject. With this, I would like to invite the key speakers of today's webinar. Director Ajay Kumar, Director Technia's Advanced Studies, Professor Amin Jha, Dean Journalism and Mass Communication, and Prateek Yadavji, the industry expert from Jagran New Media. And now I'd like to invite Dr. Ajay Kumar for his words of greetings. Well, apt topic, voice modulation and show selection, especially the journalism and mass communication students. When we talk of voice modulation, very important what kind of throw you are going to take. Before the voice modulation, there is a requirement of the apt words vocabulary. Once you get a proper vocabulary, proper note selection has been there, proper dialogues you have written down, but dialogue delivery, when we have to work on with the dialogue delivery, there are important modulations required for the same thing. A particular actor will be delivering the same dialogue in a different mode. You have heard the dialogue delivery, especially with reference to the actors over here in the movie Sholay. Each and every dialogue of the movie Sholay is by heart with lot many people who have seen that Sholay movie in 70s of 70s, and people are narrating those things, and that dialogues has become a craze. Still today, people are looking for that craze, and there are certain apt, it's almost that each and every person, each and every actor, each and every character in the movie has got its own powerful dialogue delivery mode, and their accent is very important. What kind of accent, what kind of throw, what kind of pitch, what kind of clarity, what kind of presence, what kind of mandate, what kind of body language, all these things makes your very important modulation. Sometimes the very feeble words, very feeble low sound words has got very impactful narrations when we will be talking about those things, and sometimes very loud words does not have that much of impact, powerful narrations, connotations which the audience will not be able to understand. So to make it certain things that we have with us Mr. Pratik Yadav. He has got a this interviewer, celebrity interviewer. He used to take questions, ask questions with different formats, different as a podcaster also. Jagran New Media, New Delhi. He is going to give you certain insights about his experiences. This is going to be a new learning experience for each one of you who are looking for forward for a job in front of camera. There are two aspects in journalism: in front of camera, behind the camera. Behind the camera, those people are technicians, but in front of camera, their presence would be in different modulations, sound modulations. So these things require a practice. You have to be loud and clear. You have to be, don't mean loud does not mean you have to shout. There has to make your sing, that voice must not crack. You must speak those things loud, but that loudness must not irritate. That must not able to annoy the people, the audience, but they are going to make you impactful. It goes deep inside their mind, and that changes the perceptual map of the audience. There is a three-dimensional perceptual map of every human being. When we talk of the three-dimensional perceptual map,
x, y, and z axis plus fourth dimension has been there. That is a time dimensions. So anything which is been told to you by some person, it has been etched in the memory of any each and every audience in the three-dimensional perceptual map, and that map is non-erasable. You cannot erase. If I say Maruti 800, the moment I say Maruti 800, a image emerges in your mind, a very small car, fuel efficient vehicle. You can't think of Rolls Royce when I'm thinking of Maruti 800. That means the moment I say Maruti 800, a point comes in your mind, a picture comes in your mind. If I say ambassador, a big elephant type car has been there. Most of the politicians used to have those kind of car. So these things, picture emerges. Why? Because these connotations are etched in the mind. This has been etched in the perceptual map of each and every audience. So as a voice modulation, as a show selection, you have to what? You have to take the make a dots in the perceptual map of the audience. That is our pivot point. Practice the variations. Anything which is away from the normal, it has got each in the mind in a different connotations. Sometimes we have got a small miniatures, sometimes we have got a large miniatures. So miniatures has got its own presence in the mind. Same way loud has got a bigger miniatures, has got is again a loud variations in the mind. Don't be stressful with the powerful word. It does not create impact. Right kind of deliveries to be work on with, right kind of pauses, right kind of certain words, right kind of speeches, how you interact, right kind of pleasing words in the pitch so that the crowd will be able to pull on the systems. Effective pauses, sometimes pauses speaks lots. आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी जब खड़े होते थे तो काफी लंबा पॉज लेते थे. उस पॉज के दौरान ये देखा गया है जो ऑडियंस है ना, जो बोलते थे ना वर्ड्स, उसको सिंक इन करते थे. सिंक इन, सिंक इन, सिंक इन, सिंक इन. विंस्टन चर्चिल ने एक बार एक बहुत पावरफुल स्पीच दी. इट हैज गॉट ओनली 5 वर्ड्स, फुल स्पीच, ओनली 5 वर्ड्स टू हिज ऑल आर्मी इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. Never, never, never give up. These 5 words he has said, and he just spoke these 5 words: never, never, never give up. And he come back again onto seat. People are awestruck. They are looking that speech. ये क्या बोल के चला गया? The moment people able to sink in those what he has told, there is a great applause on that issue. Winston Churchill has been known for that. He is a very, very powerful orator, efficient use of words, proper vocabulary, and that infused the people to go all out against odds to reach you can say unimaginable things. People are motivated to go for that cause. And you have to sound enthusiastic, confident. You have to not look down. Your shoulder should not be looked down. You have to be always smile. Smile will give your release right kind of dopamine. It's a stress buster. Make sure these things, but certain hormones is going to be released. Make even if the right smile is not been there, practice fake smiles. Practice fake smiles, and fake smiles also release right kind of dopamine, and it's going to make you healthy sound. I'm feeling confident that without not taking much of your time, I'm just rooted down my, you can say, experience with you. You are in the with Pratik and other members over there. They will help you to look on for what kind of voice modulation you have to use in time to come, and you can make it a good career out of it. Just pitch in, just develop a skill set uh, in your system and your mindset, and use वर्ड्स. बिकॉज जो हमने सुना होता है ना वही हम बोलेंगे, जो हमने सुना नहीं होता ना हम नहीं बोल सकते. सो two things very important before you speak: read as much as you can, listen as much as you can. जो सुनोगे, जो पढ़ोगे, वो ही बोलोगे. और कुछ नहीं बोल सकते आप. उसके लिए क्या है? Inputs. So you have got input devices. Work on with these things. जो आपने सुना है, जो पढ़ा है, वो ही बोलोगे, वो ही preach करोगे. So mind it.
This is from my side. Thank you very much, Dr. Nivita. I welcome Pratik and Dr. Amin Jha, sir. Thank you, sir. It's a very apt topic for discussion today for the journalism mass communication. Those students who are looking for a job in front of camera, this is going to be right time for understanding these things. Thank you very much for making this gracious presence, Pratik Yadav, in on the our academic platform. And thank you very much. God bless you all. Keep it up. Keep smiling. Keep going. Thank you. Thank you so much, sir, for your enlightening words and motivating words. Thank you so much. I would also like to invite Dr. M. N. Jha, sir, for his words. A very good morning. That's as Dr. Sir has told already about this really very apt topic. It's a very important topic, though in general for all, but especially for the mass communicators. It's very important. At the advent of the television, it was already supposed and felt and realized that radio has gone out of the market now. But I personally and researchers have also established it that it is the voice modulation of the various RJ. The radio has been rejuvenated back in the market as FM are very, very famous. Because of the control over the tone, stress on words, pitch, and smartly changing the rate of the speech, they have become very popular. Youngsters, perhaps you would have heard about Amin Sayani. At your age, and even younger than your age, in the early 70s especially, he was the most popular and he was the person by name the radio was being known as Binaka Gitmala. You must go through the stories of the Amin Sayani, and you must listen his the way he was giving and addressing this Binaka Gitwala's anchoring process. And who doesn't know about the Khurafati Nitin on 104 FM? RJ Renu from Kerala, the very famous Love Bite and Star Jam. You would have heard about the RJ Naved, very, very popular amongst the common man with his Mirchi Murga and Pehchan Kaun. And then RJ Maliska, morning number one from Red FM 93.5. All these are successful, all these persons are successful because of the modulated voice, because of modulated. If you have, my dear students, if you have really any ambition to do something, you must emulate all these and make your own way to control over the words tone, stressing on the word pitching, and controlling over the changing the rate of speech. Honorable Director Sir has given example of Atal Bihari Vajpayee. I simply just repeat the same person once he has challenged that whether one is opponent or my supporter will have to stop while my addressing to the public. And he was confident not because of his popularity, but because of the modulated tone. So, and we know about the success of the many personality because of this modulated the voice, who the either Sadguru, Jaggi Vasudev, or Shiv Khera, or Dr. Vivek Bindra, or Priya Kumar, Gaur Gopal Das, or Chetan Bhagat. So the expert is sitting over here in this meeting, and he is a very important person. He has a lot many steps to share with you all, my good wishes. But I expect from you all to take many things away so that you could also become some way one of the great personality by controlling your voice modulation or doing good in the voice modulation, especially in the area of the mass communication. Thank you very much. Thanks to all. Thank you so much, sir, for your kind and enlightening words. Now, I would like to invite the guest speaker for today's webinar, Mr. Pratik Yadav.
And before I formally hand over the platform to you, let me give a brief introduction to everyone about the speaker. Mr. Pratik Yadav, he is a podcaster and celebrity news interviewer, and as he defines himself, is an edifying, passionate artist. Mr. Pratik Yadav, he is into this industry for the past 8 years, and he has got huge exposure from radio to television to various media. He has uh, covered shows on legal aid, celebrity interviews, entertainment, promos videos, and he has also hosted various shows on Google Alexa advice. So I would like to invite Mr. Pratik Yadav to share his wisdom and his expertise and his experience with the students. Thank you so much, sir, and you are welcome. Most welcome, ma'am. Thank you. So, hello everyone. My name is Pratik, and I'll be taking your session for today. That is based on probably voice session, and trust me, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है. And definitely, you're going to take out a lot of things from here. Okay. So, without any further ado, let's dive deep into it. Okay. So and everyone, let me tell you, I want this to be a very interactive session. मैं चाहता हूँ जिसमें हम बहुत सारी बातें करें और आपस में एक दूसरे के साथ अगर हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि चीजें एक्चुअली काम कैसे करती है. ओके, बिकॉज ये कला ही ऐसी है, अगर आप बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, और सुनने से अगर आप इफ यू एक्सपेक्ट दैट यू लर्न, देन आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक इट डाउन टू यू कि it's not possible. Okay, so I have a presentation ready for all you guys, and let's start. So guys, basically my name is Pratik. I'm a trainer, podcaster, and let me tell you something about me as to how did I begin my journey. Back in 2013, I was a law student. Yes, I was a law student pursuing my bachelor's from Amity, and then what happened was कि ऐसे ही चलते चलते I got a friend from Masscom who told me कि Pratik, you have a great voice, this and that, you should probably try in radio. And I was like, नहीं यार, आवाज से क्या होता है, you need a lot of more things to probably get into it, right? So I just went to the radio station, did my first show that was based on agri show, and uske baad mein things just started falling into place. I felt like, yeah, this is for me. And within 3 months, things started happening in live, Red FM, Big FM, Radio One, and all these arenas just blew up for me. Then I had my debut on Voice Kids India. I had my national debut over there, and then into news and got a hang of celebrity interviews. And this is what I love doing. So yeah, I just want everyone to be better than me, whatever my skills are, and I want each and every student to pick up at least one thing from this session today. Okay? So yeah, let's begin. So guys, I've just told you about me. There's no point looking into it. Started off with Radio Amity, then with Radio Manav Rachna, worked with Radio 1 Big FM, associated with Google, Jagran, and Ghana.com, and specializing in celebrity interviews and training artists like you. And even I am an artist who's actually training himself. Okay, so yeah. So guys, my specialty is basically voice and how to play with it, because I love to play with my voice. Okay, so there is there's this session. There's not this session. There's this fact that podcast has come into the market recently in the past 3 to 4 years now, and everybody wants to get into podcasting. Let me just change the music a bit so that the mood also changes. Okay, yeah. So the thing, and tell me, is the volume of the music okay, or do you want me to increase it a little bit? Yes, sir. I can hear it. Okay. And I would request the guy or the woman playing the song to kindly put yourself on mute. Yeah. So basically podcasting जो थी वो आज से 3-4 साल पहले आई थी, and people were clueless. What is podcasting? How is it done? इसमें क्या होता है? How is it different from radio? So guys, let me tell you the difference between radio and podcasting. So see, radio में basically क्या है, you are live right now. आप बोलोगे कि प्रतीक यार live तो आप internet पे भी होते. Exactly. This is the basic difference between radio and podcast. That is that on radio you're on the FM bandwidth, but when you're on the podcast you're using the internet to stream your shows. But I'll tell you something, if somebody feels that hosting a radio show is difficult, then trust me, try podcasting. It's actually a bit different, but yes, you can always go live on that. Okay, and now, so podcast is basically where you will be probably streaming your videos, or sorry, your audios over the internet, and then you'll be probably listening to them on a portable way. But in an FM scenario or a radio scenario, you'll not be able to do that. You'll have to be right there and then, or you'll have to record the show using some MP3 player or some any sort of audio device.
Okay, so I hope everybody would have gone through the slide. I'll not be elaborative coming on to this session and reading slides. This is not my style. Okay, so let's go with it. Yeah. Now let's dive deep into it. So यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स को होती है, ये जो मुझे भी थी, वो है कि मुझे करना तो है पॉडकास्ट, लेकिन क्या करूं, पता ही नहीं है लेकिन मन भी है करने का. यू नो यू वांट टू डू इट, बट हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू डू, वेयर टू लुक एट. इन इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने में 3-4 साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता. या किसी फ्रेंड को देख लिया, या कोई टीवी का वो आ गया, आपके कोई फ्रेंड्स बोलते होंगे कि यार उसने वो किया, तू भी यही कर ले. ट्रस्ट मी, दिस डजंट वर्क आउट. Let's move to the next one. Now, do you need a professional setup? No, you don't need a professional setup. Just a mobile device with आपके जो कूलर के जो वो रहते हैं, what do you call this, कूलर की जो ग्रास रहती है अंदर में, that would suffice to record good stuff. And Dolby Audio का your software on your Android device would suffice. Trust me, it will suffice. Yes, but if you're trying to go on a even more professional manner, if your soundproofing is good, you don't have to invest that much. Otherwise, sky is the limit. You can land up anywhere between 1500 to 10 lakhs or more than that, depending upon your work. The more you work, the more you earn, the more you invest. That is how it works. Now I'll come to this one. It's a trending topic, but I'm not sure I want to do it. जैसे कि मैंने भी आपको बोला कि यार कई दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि यार ये कर रहा, तुम ये कर ले. बट द थिंग इज दैट you don't find the topic appealing. You're like, I don't feel comfortable talking about it, or I cannot connect to that topic. This is not my genre. These are things that happen. We'll definitely speak about how to understand your genre, how to understand what suits you actually. Okay. Now, my voice is too flat. I don't feel my voice is meant for this. Please don't focus on कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है या मैं कैसा साउंड करता हूँ. Trust me, I'll tell you something. The quality of your voice never matters. I've met a lot of people who do not have a great voice, but they have good deliveries. So guys, always remember, have a strong hold on your voice, on your language. अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, make sure you have good control over your language. अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आपकी जो पकड़ है वो हिंदी भाषा के ऊपर अच्छी हो. की का नहीं कर रहे हो, फ का प नहीं कर रहे हो, श की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं जा रही है. you'll have to work on your dialect as well. लहजे पे काम करना होगा आपको. ये हम इस बारे में आगे भी बात करेंगे. It's just a spoiler ahead वाली फीलिंग दे रहा हूँ मैं. Okay. Then how do I script? ये हर किसी का रोना है भैया कि यार किसी को लिखना नहीं पसंद है. Trust me guys, if you're not writing it, you'll not make it. Writing is very important. क्योंकि जब आप माइक के सामने जाते हो, for an instance, if you're not well versed with the script, then the problem is you'll fumble. You'll not be confident about the content, no matter how well you know your script. Writing forms a base. Writing gives you that standing or that confidence that you know the content by heart. I remember when I used to do my radio shows, I used to write down my own script. kahin bhi baith ke likho, get that inspiration from anywhere, do whatever there is required to attain that inspiration. There is nothing wrong in anything. Now, the next thing is likho. Then after you've written down your script, do one thing, that is improvise. We'll learn about it. Okay. Now, हाउ डू आई अंडरस्टैंड वॉइस मॉड्यूलेशन? ये होता क्या है यार? ये आवाज ऊपर नीचे करते रहते हैं एंड यू फील इज गुड, बट इनको पता कैसे चलता है कि कब आवाज ऊपर करनी है, कब नीचे करनी है, कब पिच को बढ़ाना है, कब कम करना है, कहाँ टोन जाएगी, कहाँ शब्द है, कहाँ शायरी है, कहाँ फनी होना? दैट इज वे टू मच. ट्रस्ट मी, इट इज नॉट. आई एम हियर टू सॉर्ट दिस फॉर यू. ओके, लेट्स वर्क इट आउट. So guys, let's work out on the final stages or the first base stages as to what to do. The first is self-awareness. कि यार मुझे क्या पसंद है, मैं आगे बात करेंगे. Like, what is your genre? What do you want? Is it something funny? Is it something dramatic? Now, the concept. Try to form a concept around your show. If you're funny, make a show that is fun and talks about now you will be feeling कि प्रतीक फन को मैं किसी सीरियस टॉपिक से कैसे जोड़ूं? गुड क्वेश्चन.
अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया तो the thing is, if this is the case, in this case you'll have to work hard on your scripting. कोई बोरिंग टॉपिक है, सपोजिटली आपका शेयर्स हो गए, सेंसेक्स हो गया, कैसे करोगे? यू हैव टू वर्क इट आउट. आफ्टर दैट, आफ्टर वर्किंग इट आउट, यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ ऑन द स्क्रिप्ट, मेकिंग इट अंडरस्टैंडेबल, मेकिंग इट रिलेटेबल. हम बात करेंगे इस बारे में. देन वी कम डाउन टू योर रिकॉर्डिंग पार्ट. कंसेप्ट, स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग पार्ट यू नीड बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक कैमटेशिया हो गया, आपका ऑडासिटी हो गया. मोर देन एनीथिंग आप फोन में कर लो, आप अपने इससे व्हाट डू यू कॉल दिस, डॉल्बी ऑडियो से कर लीजिए आप रिकॉर्डिंग. इट्स ओके. nobody is expecting too much out of you, and if you want to learn now, you'll come down to Pratik, chalo humne record kar liya, what about editing, what about sound mixing and all that. I'll tell you. The thing is about editing. Editing will take time. Editing, you'll have to learn where to place that exact pause. Nobody taught me. I was interning with Radio 1 and I just started cutting music. And मुझे पता चला कि just cutting music isn't enough. You'll have to make it sync with the previous statement so that it looks good with the next statement that comes next. So इसके बाद में you'll have to then figure out कि कहाँ you'll have to go for the music and stuff. And trust me, guys, me giving you a lecture of probably 1 hour won't help you. It won't. You'll have to work it out yourself. You'll have to go for sessions in where I'm actually teaching you how to edit and where to place what. कहाँ पे fade in करना है, कहाँ पे fade out करना है. If you are someone who's an avid listener of radio or podcast or even of music and likes to go for their own music production, I do have friends like that who do their own music and stuff. Yeah, so it's really good. Yeah, you'll get to learn a lot. Make friends who are into that industry, and trust me, in this industry that is your mass media, guys, no matter how good you are, the better connections you have, the better positions you'll be at. If you're good, that's good. But again, you need skills again. Skills and network required. Now, moving ahead. Let's talk about self-awareness. Now, understanding your interest. Guys, this is what I do. I do entertainment, I do interviews, I do educational-based shows. This could be anything, could be funny. You could put in anything over here. Could be a stand-up comedy show. Not good at stand-up comedy. I've never tried it. I know I'm not good at it. Trust me. Now, so coming down to what suits me. Is there any student over here in this podium right now or in this webinar right now who wants to know or is confused? I'm really here to help you, because if I help you, I'm sure a lot of students will be helped at the same time. Any brave soul over here or any passionate soul over here So, who uh, probably, yeah, tell me, yeah. tell me. Hello, sir. So, Ananya Jain this Hello, side. hello. So, I used to do voiceovers. I am trying to getting in this, but sir, Mm-hmm. the main problem I'm facing is like Mm-hmm. I record things and Mm-hmm. but there is no one to judge, not judge me, but Ha, to ha, ha, guide ha. me. Like Judge me is the right word. Judge me is the right एक्चुअली या word. Yeah. जज इज द Mm. राइट वर्ड बिकॉज Mm. मैं बोल रही हूँ लाइक अगर मैं सेम रिकॉर्डिंग 3-4 बार सुन रही हूँ, हाँ मुझे Mm-hmm. डिफरेंस लगता है, मुझे लगता है, बट एक लिहाज होता है, मतलब जो वर्ड्स हैं उनको पकड़ने में, या फिर मुझे कहाँ पॉज देना चाहिए जैसे आपने कहा, या फिर मुझे कहाँ Mm. वॉइस अपनी अप करनी चाहिए, डाउन करनी चाहिए, इसमें क्या Mm. इम्प्रूवमेंट हो सकती है या कितनी इम्प्रूवमेंट Mm. हुई है, वो चीज़ Mm. मुझे पता नहीं चल पाती है। देखो, इसके लिए यू विल हैव टू रिकॉर्ड योरसेल्फ, लिसन टू योरसेल्फ, send your recordings to as many people as possible, send it out to your faculty, ask them about this कि यार कि सर और मैम ये सेंटेंस में किस तरीके से बोल सकती हूँ. एक ही सेंटेंस को 4 बार बोलने की ट्राई करो. लाइक ओके, ओके, okay. You see, there's this variation in here. Choose, I'll teach you how this is done. Voice modulation with conceptualization is very important. Okay, conceptualization as in, I'll tell you. Pick a small word and then try to intonate with different kinds of feelings. If you can do that, get bigger sentences to do that. Like Ram goes to school. Acha, Ram goes to school. Ram goes to school. You see that? There are different plots to it. Now, how or what is your content? You can say it romantically. Ram goes to school. See, you can do it like that. Now, it depends how you want to do it. But you'll have to be in tune with your emotions. Always be clear what is it that you want to represent. Number two, say that. Now, आप बोलोगे Aditi, बोलो. Is it making sense to you? I need to Yes know sir, that. yes sir, yes sir, I got Okay. it. Now,
ओके गेट जी जी ठीक है. इसके बाद में what you need to do is that once you in tune कि ठीक है, you are clear what kind of emotion you want to represent. After that, formulate words and then represent it accordingly. आपके words में जिसमें राम हो गया, noun हो गया, goes verb हो गया, school adjective बन गया. Now focus on where you want to put your focus on. ठीक है, जैसे कि आपका जैसे कि आपका स्कूल हो गया, ठीक है, जो गोज हो गया, तो वी आई हैव एन एक्सरसाइज प्लान्ड फॉर इट. ओके, नाउ अदिति टेल मी, डू यू हैव दिस इशू कि आपको पॉडकास्ट करना है लेकिन आपको पता नहीं कि वो क्या सूट करता है क्या नहीं करना है? डू यू हैव समथिंग लाइक दैट इन योर माइंड? Yes, so it's Ananya Jain. आई एम And सो sir, सॉरी. नो प्रॉब्लम। या सर, बिकॉज़ मैंने कई बार मतलब उसके लिए भेजा है, तो मुझे ये बोला गया है कि पॉडकास्ट उसमें डिफरेंस होता है। बट मैंने जब मतलब रेक्टिफाई करने की कोशिश की है, बट आई थिंक मैं उस पॉइंट पे नहीं पहुँच पा रही हूँ। कोई बात नहीं, अब पहुंच जाओगी. आपका देखो बहुत बेसिक है, समझना, कोई खीर नहीं है ये, ठीक है. इट इज लाइक आपको करना क्या पसंद है, सिंपल सा सवाल है. व्हाट डू यू लाइक डूइंग, तो लाइक. ऑनेस्टली मुझे मतलब कार्टून्स, किड्स वॉइस इन सब का शौक है, मैं ये करती हूँ। That's brilliant. In that case, what you can I can help you with an ideas कि इसमें आप एक काम कर सकते हो कि you can start up your own show wherein you see now again there is a difference. आप अपने शो से अपने कार्टून कैरेक्टर्स की आवाज से आप कोई सीरियस टॉपिक भी के बारे में बात कर सकते हो, जैसे कि आपका वुमेन सेफ्टी हो गया एंड गॉड नोज व्हाट नॉट, और यू कैन टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट एज वेल, ठीक है, और यू कैन टॉक अबाउट एजुकेशन एज वेल. It's your wish. Now इसमें you need to pick a genre. Now what you're talking about is mimicry over here, ठीक है. बट इन मिमिक्री टाइप ऑफ मिमिक्री या वीओ में आप अगर करते हो, दिस इज अ मिमिक्री सॉर्ट ऑफ वीओ. सो इसमें अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है अपना, तो यू हैव टू फाइंड योर ओन जॉनर. व्हाट डू यू वांट टू डू, So व्हाट. actually, हाँ, sorry to interrupt, but so actually नॉट I एट don't ऑल. mimic. I don't mimic like मेरे पास जैसे अभी मैंने बोला ना, मैं खुद से प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो जैसे टिकटॉक पे ना पहले बीच में एक फॉरेन का कोई पर्सन है, वो भी वॉइस ओवर है, तो वो ना स्क्रिप्ट्स डालता था। 30 अच्छा. सेकंड्स की स्क्रिप्ट्स होती थी, उसमें अलग-अलग स्क्रिप्ट्स होती थी, 3 टू हम्म, 5 स्क्रिप्ट्स होती थी, उनको अलग-अलग वॉइस में बोलना होता था। तो हम्म, इट्स हम्म, लाइक कि आप कितना कर सकते हो कार्टून्स की उसमें। तो लाइक मैं अपनी वॉइसेस निकालती हूँ, ऐसा नहीं है अगर शिनचैन है, तो मैं शिनचैन को थोड़ा बहुत आई मेबी सी. मिमिक कर लूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आवाज़ निकाल रही हूँ, मैं अपना वो देती हूँ। So is this a new character altogether which nobody has seen or something like that? एक्चुअली इट हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड और एनीवेयर I एल्स see लाइक that. I see that. But that's good. If it's not published, you don't have to be ashamed of it or you don't have to be sorry about it. Yeah, if it's not या published, it's okay. Yeah, you're doing good. Anyway, तो इस केस में if you see, now you want to see, देखो, अभी what you are doing right now is basic general voiceovers. What I am talking about here is about starting off your own show or starting your own podcast. And what you want to know from me is how you can actually better your delivery. So I'll come down to that. See, you'll have to listen to a lot of cartoons. आपको उसकी intonation पकड़नी पड़ेगी and then you'll have to experiment. Always experiment, experiment, experiment. क्योंकि मैं भी एक आवाज मैं भी निकाल सकता हूँ and that is again through an experiment that I came over here and I mastered it. बात ये. So this is the only guidance I can help you, and always see that is appealing. Appealing as in आपने record कर दिया and send it out to your friends or family and faculties more importantly who will be able to upskill you totally. This is how it works. so what are the practices like what are the exercise, and one question that what things we should avoid, because I am a foodie person, like I love junk food but also at देखिएगा, the same time I'm ready to like avoid such things but let me tell you, the thing is you need not avoid anything. ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, अपनी रिकॉर्डिंग से पहले गेट अ बॉटल हैंडी ऑफ वार्म वाटर. ऑलवेज कीप दैट. अगर आप में से बोलोगे प्रतीक हमें कोई दवाई बताओ या कुछ इस तरीके से बताओ जो आपका गला क्लियर करता हो, तो आई टेक पतंजलि का सरस्वता रिस्ट, प्रॉब्ली 90 रुपीज की बॉटल आती है, एंड इट एक्चुअली क्लियर्स योर थ्रोट, पूरा साफ कर देता है गला. द फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग वेकिंग अप, एक घूंट सरस्वता रिस्ट. प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं किसी को, ट्राई इट योरसेल्फ, यू विल गेट टू नो इट्स बेनिफिट्स. एंड यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, नो नथिंग लाइक दैट, गो फॉर रनिंग, क्योंकि अगर स्टैमिना नहीं होगी तो बड़ी लाइंस ले में बोल नहीं पाओगे. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज यार, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज इट. thank you. मोस्ट. Yeah. Now, anything else? Anyone?
यस सर, दिस साइड उम्मेहानी है यार। Go on, tell me. ओके सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं कोई चीज रिकॉर्ड कर रही होती हूँ ना, तो मुझे जो अपनी अपनी ब्रीदिंग होती है, सांसों की आवाज और समथिंग, वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। तो उस चीज को हम Good, कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि सर good. ये लिटरली सर ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करती है। इनफैक्ट हम किसी यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, वो लोग भी अपना रिकॉर्ड करके डालते हैं, तो उनकी भी डिस्टर्ब करती है। तो मैं ये चाहती अगर हूँ आप कि मैं डालूं हाँ, तो वो चीज दूसरों को डिस्टर्ब ना करे। ना करें, ये जब आरजेस जब लाइव शोज करते हैं तो उसमें भी या एक हाँ शब्द जी को जब सर। खत्म करते हैं तो ये चीज आती है। आई सी दैट द थिंग इज इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एडिटिंग। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? मैं एक लाइन खत्म कर रहा हूँ, वहां से दूसरी लाइन शुरू कर रहा हूँ, तो भाई मैं सांस तो लूंगा ना बोलने के लिए। लेकिन अगर मैं सांस नहीं लूँ, अगर मैं उसी चीज को काट दूंगा एडिटिंग में, इट विल वो लय में नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी इन सिंक, एंड इफ इट्स नॉट इन सिंक, सुनने में अच्छा ही लगेगा, people won't be able to relate to them because see we all are humans in the end. Yes, you are right कि यार वो अच्छी नहीं लगती, I buy that. You can tone it down a bit, you can lower its volume a bit, but उसको चलो काट दोगे, but it has to be done skillfully. Otherwise, it could be a huge difference between a good recording and a bad recording. Always remember that. सर उसी चीज को हम कैसे मेंटेन करें कि मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज गुड है या फिर बैड है? हम मतलब सुनने के बाद रिकॉर्डिंग पता करते चलेगा, सुनने के बाद पता चलेगा, सब सुनने के बाद पता चलेगा। ऐसे नहीं बता सकता मैं। आप मेरे को ओके एक साउंड ट्रैक दो, मैं आपको सुन के बताऊं। अरे आपकी फैकल्टीज भी बताएंगे आपको, दे एवरीबॉडी नोज इट यार, कम ऑन। या ओके सर, ओके, थैंक यू सो मोस्ट मच वेलकम, सर। मोस्ट वेलकम। Okay, I'll take more questions, but let me complete this slide. Okay. Now, so is it appealing to you, and are you comfortable talking about about? Are you comfortable talking about your topic with conviction or full जोश के साथ में, passion के साथ में कि यार, am I able to deliver this, or if you are you able to dive deep into your depths of your topic with conviction? Go for a topic like that. Then comes whatever, see guys, whatever is trending in the market, आज तैमूर का जन्म हुआ है, कल कटरीना की शादी, whatever, all that guns and whistles, whatever is there. See if entertainment is your part or not. Do you feel like you want to talk about celebrities, the latest gossips and everything, or do you want to talk about celebrity interviews, or you want to talk about some education or something? If you feel that is the thing for you, go for it. But it is very important that you should know what is appealing to you. Just because something is trending, कि अभी कोई नया scam हुआ है, you just get into it, start talking about scams, and yet you're not interested about it, doesn't make sense. It won't take you anywhere. It's just कि ठीक है, मैं बहती नैया में हाथ धो लिया, but you'll be like again wandering here and there, not being able to make the best out of yourself. But yeah, you'll definitely learn a bit of scripting, a bit of voice deliveries and everything. But in the long run, always be clear what you want to do, what appeals to you, because if you stick to that, the progress rate is higher. I remember I started off with basic ज्ञान show by your agri show, जिसमें मैं farmers को ज्ञान देता था. Then I started off with Infotainment Unlimited, where it was all about fashion, news, and current topics and everything. So that was appealing क्योंकि हर show में कुछ नया हो रहा था. तो all right, there's this what do you call newness to the show. So this used to help me gain a lot of exposure, meet a lot of people, and yeah, guys, trust me, go for any show that helps you meet a lot of people, probably because meeting a lot of people will help you excel in that field, which is very important for you. Supposedly if you are into entertainment or you are into education, get into education, meet deans, principals, and whatnot. Meet them, take the interviews, try to understand the flaws or the basic current scenarios of anything and everything. This will help you. Yeah. Now, coming to now, your voice does not matter. Trust me guys, आप बोलते हो कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, please get that concept out of your mind and throw it out. It's just a phobia or क्या कहते हैं उसे, I'm not getting the word right now, but yeah, don't feel like that your voice is not good or you're not meant for the radio. If your delivery is good, you'll do well in life. Trust me. If your control over your voice is good, or your language is good, you'll do good in life. Again, now इफ योर डिक्शन इज गुड, आपका लहजा अच्छा है, आप अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे, आपको कोई रोक सकता है? शब्द क्लियर, आप शब्द अपने क्लियरली बोल रहे हो, एक एक लाइन बोलने के बाद यू आर टेकिंग इफेक्टिव पॉजेज ओवर देयर, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं से बोलता चला जाऊं बड़ 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 बड़, मेक्स नो सेंस गाइस. नाउ अगेन, there is a lot of into it, we'll discuss more. Now the magic of delivery. We'll talk about the magic of delivery, क्योंकि see,
The script is the backbone. Now, what if your script is weak? What do you do now? If the anchor or podcaster, RJ, whatever you say it, yeah, or the person who's delivering it is good, वो बेकार से बेकार कंटेंट में भी जान डाल देगा, because the way he's delivering it will make it interesting or appealing to everyone, and that is your job. That is where you need to be in life. Okay. Now, concept. So guys, choosing a topic, try to choose your topic कि आपको, again coming down to it, what appeals to you. Again, I'm just coming to it, dedicating, deciding. Now coming to it is, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो भी टॉपिक है या आपका जो भी शो है वो किस एज ग्रुप को केटर करेगा. इज इट गोइंग टू बी चिल्ड्रन, और राइट, स्कूल किड्स, और their parents. अगर कॉलेज है, you'll have to intonate on that, you'll have to deliver in that sort. If not, figure out what is the age group you're actually catering to, which will help you. Now, then comes down to sticking to the topic. No matter what, if you're hosting a show, always make sure that you're sticking to the topic and you're doing justification to your to the name of your show as well, because in the end the name goes by the flow, and which is very important. Never deviate. But yes, you can touch different topics, but इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने टॉपिक के अपने अपने शो के नाम के यू गोइंग विद अ टॉपिक एंड देन यू फाइंड अ डिफरेंट क्या कहते हैं एडजॉइनिंग टॉपिक टू इट, एंड आपने अपना मेन स्ट्रीम छोड़ के आपने पूरा फोकस उस पर डाल दिया. Never do that, because that is going to it's basically going to make people disinterested in your topic. They won't be able to know कि यार ये चल क्या रहा है यहाँ पे, ये अभी बात इसकी कर रहा है और यहाँ से टॉपिक चेंज हो गया है, and how is this working out. People will be disinterested, they'll not listen to you, and they'll just skip the channel. Now, always be crisp and not beating around the bush. Whenever media people sell their news, make sure that you're being crisp. You're not giving out false news कि राम स्कूल जा रहा है, अभी हम आपको बताएंगे, अभी हम आपको बताएंगे. I know you want to build that tension, you want to build that curiosity between everyone, and then again, but podcasting doesn't work like that. You'll have to be straight, short, to the point. Someone asked it how to control their breathing no, sound while recording anything. Yes, someone was asking this question. Yeah, there's this So, girl who asked this question. Yeah, I'll probably answer that as well. so Mhm. I am also fond of recording so many things. So how I control, the best way is to do some breathing exercises that gives you strength to stretch your breathe, and at the same time practice it that how to take your breathing while you're speaking, and you will find that you can breathe through your nasal no orifices very slowly while you are speaking out. So in that way, you can avoid those voice that the breathing sound. But yes, as Pratik said, that sometimes it adds little human touch when you speak. So not to bother more about your breathing sound. It sometimes it is required to make us comfortable that yes, I'm listening to a human. Thank you, ma'am. I'll just show you a promo that I had made. It'll probably help you know a little bit more. मैं इसकी आवाज बढ़ा देता हूँ. Introducing fresh new talent worldwide, only on Sunday Spotlight. Now, guys, is it audible to everyone? सुनाई दिया सबको? नहीं दिया? Tell me. Yes, sir. If not, Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, yes. sir. is the volume and is the audio crystal clear? You know where what happened? Did you get that? Yes, sir. I need to know. Yes. Yes, Good. sir. Sir. So, guys, this is basically a promo that I had made myself. First, you record, then you find music, you cut, you paste, you sync them together. Okay, I have done nothing in it. Okay, I have just found a few tracks. I had pasted them together. But again, you'll have to know the knowledge as to आपको क्या paste करना है, कैसे paste करना है, कितनी beats per minute है song का. You'll have to know that. Okay. And if you ask me if I'm using some sort of software, no, I'm not using any software. I'm just using my mind to use this. It's because trust me, in media, you do not have to be extremely specific about BPM, like beat per minute. कि कितने beats कब आ रहे हैं. No, it is about what goes well with what. Like, does royal blue go well with dark brown? Yes, no, maybe. Depends on the skin tone of a person. Not everyone. Yeah. So that's how it works. So that's how it works. Yeah. Now I'll just show another एक inflated podcast दिखाता हूँ. I'll just this is another one. Let me see if this plays. क्योंकि मैं Google Drive से play कर रहा हूँ. आपने कभी सोचा है और तो वो periods के समय पेट में दर्द क्यों होता है? बुलेट में फ्यूल इंडिकेटर
क्यों नहीं होता? बिजली नहीं होती तो टीवी कैसे चलता? महात्मा गांधी की फोटो नोट पर कब से छप रही है? ऐसे ही सरप्राइजिंग और जनरल नॉलेज टॉपिक्स के आंसर्स मस्ती से सीखिए प्रतीक के साथ। लेकिन कहाँ भाई? अरे भाई, जागरण पीडिया पे, ओनली ऑन जागरण। So guys, again, this is a educational based podcast, and I'll also help you with the podcast right now, जो भी मैंने record किया है थोड़ा time पहले. I'm just trying to load it. Problem ये computer से हो नहीं रहा है, and just trying to sort something for you. Let me see if I can probably play a show for you. TCS 1 and 2. Okay, this might sound interesting to you. So this is just a concept. I'll just help you. अभी आप सुनो, then I'll explain everything to you. What works where. हमारे सभी सपने पूरे हो सकते हैं यदि हम उन्हें पूरा करने की हिम्मत करें तो। सपने वेब सीरीज में तो क्या नींद में भी पूरे नहीं होते। आया बड़ा। You're going to love this. Trust me. जब दिल में हो सपने और दिमाग में उन्हें सच करने का हो रास्ता, तो सपने पूरे भी होंगे और सुनाई भी देंगे। Only on The Zardest Show. लेकर ऐसी हस्तियों की कहानियां जो अपने सपनों के लिए लड़े और अपने नाम का सिक्का चलवाए। अब आएंगे वो ओनली ऑन द जबरदस्त शो, ओनली ऑन जागरण। स्वागत है आपका। और आज हम मिलेंगे एक ऐसी अदाकारा से जो लड़की है या बला, जिन्होंने दिल जो चाहा वो किया। सक्सेस की राहों से है उनकी यारी, कहती है सच फुल ऑन, और जिन्हें आसमां खुद कह रहा सपने देख जा। अब भी पता नहीं चला, तो चलिए उनकी कला की एक झलक सुनाता हूँ। हो मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर। तननन 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 तननन। अब चलिए, सस्पेंस बहुत हुआ, और अब आपको बता ही देता हूं कि ये आखिरकार वही है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में यहाँ मूवी से की, और फिर इन्होंने कुछ आइकॉनिक मूवीज जैसे बचना है हसीनों, किडनैप, जिला गाजियाबाद और तकरीबन 20 फिल्मों में काम करके बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उसे बदलने में भी कामयाब रही। एंड शी इज नन अदर देन विनीशा लांबा। वेलकम विनीशा, वेलकम टू द जबरदस्त शो। Hi Pratik, thank you for such an amazing introduction. Alright guys, enough. So मैंने आपको इतना इसलिए सुनाया so that you can get a plot of it. First, the promo is there. Now, after the promo, first I'll discuss about promo making last. The thing is, first you need to be clear about your show. Then, after you are clear about the concept of the show, you need to make a good intro out of it, right? A good intro is always appreciated. Be it you're talking about, I'm doing this show called Pratik Ki Shadi for jeevansathi.com, shadi.com, and God knows what.com. So it's like, first you'll have to conceptualize it here. What is it that you're going to talk about? Once you've done that, now you need to work out on the lines here. How do I go about it? अब मैं उसके बारे में क्या बात कराऊंगा? So whenever you're trying to make a show, make sure that you're you are actually helping the listener with your experiences of the life, wherein you are helping the listener be at a certain point in life wherein even he can relate to you. If you can make a podcast that is relatable to you, trust me, you've done it. You know, do not need anything else. Now, Pratik, how do I make my podcast relatable? कैसे करूं? Get basic examples. लाइफ के छोटी मोटी रोजमर्रा की जिंदगी, जैसे माँ के ऊपर इतने शोज बनते हैं, मेरी मम्मी मेरा इतना ध्यान रखती हैं, this and that. Try to be as generic, as simple as possible. Get a lot of research into it, but don't pack it with too much research कि सुनने में लगे कि यार ये अच्छा कब खत्म होगा. नहीं, don't get into that zone. Try to make it funny. If you feel the intro is too long, put a splash in your music effects, this and that, but it should be appropriate कि आप कहाँ डाल रहे हो, because if you're not putting it correctly, it's not working out clearly. So this is about it. And yeah, first tell me, is there any question about this concept wala part? Is this concept clear to everyone? This is what I need to know. Going ahead, any doubt whatsoever, please tell me. Now, guys, coming down to scripting, this is the basic of a script. Okay, whenever you're getting into scripting, you should always know कि यार
what is the duration of the show, ये कितनी देर का होने वाला है, 5 मिनट का होने वाला है तो ठीक है, you should write it down for like 300 pages, or sorry, 300 words, not pages, like 300 words would be enough for like 5 minute speech. But again, वो 5 minutes should be very well allotted कि यार okay, one and a half minute would probably be my intro, or 30 second would be my intro, then you come down to the subject, like see, duration, set up the problem, and you'll solve your listeners and what you'll know. All right, the script, all this is in front of you. Okay, you'll read this, I know that. If you're having any doubt, ask me, I'll tell you about what I experienced. This is just for my teaching purposes ki yaar, theek hai, people can actually relate to the script, to the slides in front of you. Okay, so I'll tell सर you all. Yeah. सर आपने स्टार्टिंग में मतलब कोई नॉर्मल शो से भी स्टार्टिंग करी होगी, सो आप हाँ हाँ कोई हाँ, स्टार्टिंग बता सकते हो? मेरी स्टार्टिंग बहुत खराब थी. आई हेल्प यू विथ माई खराब स्टार्टिंग, वेट, आई शो यू. रुको देखता हूँ मैं. You want to know where I started from, right? यस सर. Yes, wait, I'll show you. Um, हाँ, infotainment. Let me see if I can. Drive में वो है या मेरे नहीं, मेरे पास में TIAS नहीं, infotainment तो नहीं है मेरे पास. But let me see. I have success stories. This is my second thing before joining Jagran. Wait, I'll try to see if anything works out. MP4 है ये. I've just played it. ये package show नहीं है मेरा. ठीक है, ये एकदम raw file है. Welcome listeners, you're listening to hashtag success stories प्रतीक के साथ only on और पीछे देखो, this is what happens in life. This is welcome listeners, you're listening to hashtag success stories प्रतीक के साथ only on Radio Amity 107.8 FM. तो आज के हमारे शो में हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जो कि वर्सेटाइल होने के साथ ही साथ एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट होने के साथ ही साथ वो एक फैशन ब्लॉगर, a beauty blogger. Moreover, she also has hosted a lot of events. She also goes for a lot of celebrity appearances. Apart from that, मैं आपको इनके बारे में कितना बताऊंगी कि जितना भी मैं कहूँ वो कम ही होने वाला है. वो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग भी करती है, ट्रैवल ब्लॉगिंग करती है, लुक बुक्स में भी आती है और न जाने क्या क्या. इंट्रोड्यूसिंग द वन एंड ओनली शिवाली. हाय शिवाली, वेलकम टू अ शो. थैंक यू प्रतीक. So how is your total experience? क्या शो में क्या होने वाला है? What is your experience? I mean, what is your expectations? वेल, मैं तो कुछ अच्छा ही सोच रही हूँ, कुछ अच्छा होने वाला है. Okay, तो शिवाली से और बहुत सारी बातें होती रहेंगी only on Radio Amity 107.8 FM. All right. Does this थैंक help यू you सर. gain some clarity कि मैं भी आपके जैसा ही था कभी ना कभी? सर आपने स्टार्टिंग बहुत बढ़िया करी है, थैंक यू सो मच. नहीं 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 नहीं, मोस्ट वेलकम. ऐसा नहीं है. I'll tell you something. If you want to build that confidence, or if you want to learn that कि how to start, trust me guys, get a mic and get into the crowd. जितना आप conscious होगे, the more you feel uncomfortable, it'll help you. Because if you can work out, or if you can apply your skill in such a situation, trust me, you'll be able to apply your skill, be it 8,000 people. It hardly matters here. It hardly matters. So this is very important that you do. When I used to be like you guys, I used to get into a lot of events जिसमें मेरे को बोलने का हो, क्योंकि coming down to it, I am someone who doesn't like speaking. मेरे को इतना बोलना नहीं पसंद है. ठीक है, I'm someone who's very quiet and introvert kind of a person. And when I'm hosting this webinar right now, nobody will be able to actually come down to it. Ki, this guy, see, this is how it works. But again, this is a skill that needs to be applied. So yeah, this is it. Anything else anyone would like to know? Probably no. Okay, silence is golden. Yeah, tell me. या सर आई वांट टू आस्क, जैसे मैंने बताया मैं कार्टून की वो करती हूँ, तो कार्टून हैज एनी प्लेस इन रेडियो और इट इज ओनली फॉर एनिमेशन ओनली? Let me tell you again. It depends how good you are and how well versed are you with the industry that people are looking for stuff. And let me tell you, there are, start writing down names now. Okay, there's this company named Pocket FM. Okay, they are looking for voiceover artists. Okay, and my friends are working over there. And if you want to get into VOs, not cartoons, if you just want to get into VO, this is the place to be. Then there's this Pocket Bang करके है एक this company. Sorry, Bigwood. Bigwood is the name of the company. They are looking for again podcasters. Now it depends. Now your genre, I'll tell you.
is कार्टून का you'll have to search a lot, you'll have to get into your आपका किसी YouTube चैनल के साथ collaborate किया, you'll have to send your work to Disney हो गया, आपका Netflix, so you'll have to be everywhere, जहाँ भी animation काम है you'll have to search, you'll have to scavenge and you'll have to research a lot. If you feel कि आपको काम naukri.com पे बैठे बैठे मिलेगा या indeed.com पे मिलेगा, trust me, this is not how the media industry works, which took me a lot of time to understand that. ये दिक्कत थी because I was from the law background. I didn't have any guidance from the media. It is when I got my first break तब मुझे पता चला how things work out. So it went out with your internships that I got. Luckily, my friends were in good places, so they helped me judge and they helped me connect with a few people. Make good friends there who are good with resources, who will help you get places in life. Very important. Yeah, And so that's it. is it okay like not to mimic a cartoon but Yeah. making your own voice? See, individuality always sells. Okay. देखो, Okay. I know artists who can bring who can bring Shinchan to life. I know artists who can bring Nobita to life. ये सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन यार हर कोई तो यही कर रहा है, ठीक है? Yeah, exactly. Like as you said, na, that I am not like I do not mimic. It's like, oh, pop, like I do something like that. Like it's हम्म, sometimes it could be kids' voice, sometimes it could be a vicious witch. Like हाँ, it depends every time. Like it's differ. It differs every time. I see that. तो इसमें आप एक काम कर सकते हो. What you can see, I'll tell you the genre you're into in, or the genre that anybody would probably be in podcasting is कि there's a lot of competition. ठीक है? Hmm. Let's face this fact right away, Yeah. right from day one. There's always competition. Now, how do you beat that competition is a good question, and I'll help you answer that. The thing is, ki, in this scenario, what you can do, formulate a show, talking about a topic, then putting in your cartoon wala voice beach mein, and coming down to the conclusion. ठीक है, मैं इस प्राइमरी मैप पे आ गया हूँ. आई हैव टू शेयर इट विथ यू. सी गाइस, अब आपको योर नेम अगेन, आपने आगे भी एक सवाल पूछा था कि जस्ट रिकॉग्नाइज्ड यू विथ योर वॉइस. हेल्प मी विथ योर नेम. So Ananya Jain. Ananya, you mind if I address you with your first name? No, Ananya? no. Yeah, it's Okay, thank completely you. fine. Yeah. Thank you. So Ananya, the thing is, आपको कुछ नहीं करना है. पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका शो क्या है, which is very important. ठीक है, अपना एक कुछ बनाओ, get any topic that you want to talk about and then put in your cartoon wala part into it and put it smartly कि cartoon वाला part over भी ना हो, सामने वाले को सुनने में भी मजा आए और वो repetitive ना लगे, which is very important in any show that you're making. कोई जैसे आर्टिस्ट क्या करते हैं, एक ही लाइन बार बार बोलेंगे, एक ही वर्ड बार बार बोलेंगे, एक ही चीज चार बार घुमा के बोलेंगे. नहीं, वो नहीं करना है. पीपल विल गेट बोर्ड. मैं क्यों सुनूं, चले जाऊंगा. This is what the ideology. And trust me, people in today's world want too much in a very limited time. इसका एग्जांपल है your TikTok की रील. वहां पे you get mostly you get makeup videos, you get bloggers doing this and that, women looking pretty and giving out a social message. There's a lot. See, they're packaging too much into it, which is getting you engaged for like the 10 seconds. And the 10 seconds, you're having that uninterrupted, full focused mind towards that clip, which is very important. If an artist can do that, is what? Nothing else required. Being a podcaster, you'll have to be really good with your voice, really good, strongly good with your content, and how you are maintaining that the tone of your voice. कि आप कब अपनी आवाज ऊपर ले जा रहे हो, कब नीचे ला रहे हो, like that. It always depends on that. Now coming down to your, I'll help you. Nice. Ananya, Ananya, be on the line now. See, the Okay. thing is, whenever you're trying to make a show or something like that, then there's this thing. You can view this PPT, right? Yes, no, maybe. Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you. Now see, basically your first you should know कि यार आप किस बारे में बता रहे हो, your background of the show क्या है. फिर धीरे धीरे आपको उसमें उसके अपने बैकग्राउंड से उठते हुए थोड़ा उसके उसके बारे में अपने अपनी खुद की प्रॉब्लम्स बताओ कि मेरे यहाँ पे ये थी. फिर लाइफ में कहाँ पे वो ट्विस्ट आया कि you got to have an insight or you can give out a social message to someone, and then coming down to it, you're coming down to a conclusion or something like that. So this is the basic outflow of a show. आप कोई भी शो बनाओ,
शुरुआत ऐसे ही होती है। आप क्या करोगे, ज्यादा उसको घुमाओगे, ट्विस्ट लाके घुमाओगे उसको, थोड़ा और उसको क्लाइमैक्स डिले करोगे, बट मेक श्योर दैट these mind gasms are actually, or these bursts of curiosity, suspense are placed in the right place, and ऐसा लगे कि यार ये खिंच रहा है. Always make sure ये अगर हो गया तो फिर you're failed again. And yeah, this is it. Use your शायरी, use funny words or something like that, use great lines into it. कोई डायलॉग हो गया मूवी का, ये नहीं मेरे को कॉपी कर लो उसको, या आप कोई लाइफ की सीख दे सकते हो इसमें, whatever that suits you, that you feel कि यार this is something that is required into it, you can do that. हेलो सर, वन दिस साइड। Hi brother, please tell me. तो सर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। हमें लग नहीं रहा था हम नॉर्मल से अटेंड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था आरजी हमारे सामने बैठ के हमारा इंटरव्यू ले रहा है। तो सर लाइक अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं. एंड दूसरा सर लाइक जैसे मेरा इंटरेस्ट जैसे आपने बताया ना एंटरटेनमेंट में है, तो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब एंटरटेनमेंट क्या ट्रेंड चल रहा है, इन सब पे क्या ट्रेंड चल रहा है, घूमना बहुत पसंद है। तो मतलब मेरा ये भी है कि लाइक मेरे को स्ट्रेंजर से मतलब जैसे 24-25 साल के जितने भी ऊपर के लोग होते हैं, मेरे मतलब मैं अगर बात करता हूँ तो मेरे फ्रेंड बन जाते हैं। मेरे साथ ऐसा सीन हो भी रखा है। तो मतलब लेकिन मेरा ये है कि सर मैं जब बोलता हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं रुक जाता हूँ बीच में बोलते बोलते, लाइक आई फंबल अलॉट। मतलब उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी गाइस. देखो, ये एक स्किल है जो मेरे को मेरी डायरेक्टर ने सिखाई थी, एंड आई एम रियली हैप्पी. उनका नाम है गौरी मैम, ठीक है. इन माय इनिशियल डेज वो मेरे को हमेशा कहती थी, लाइक ब्रदर, लाइक योर रेट ऑफ स्पीच इज वेरी हाई. रेट ऑफ स्पीच हाई होने, सो लाइक ओके, आई एम डन विद दिस स्लाइड. ब्रदर, यू मे आई हैव योर नेम प्लीज? The one share. Vansh. All right, Vansh. I'll keep your question aside right now because I'm coming to that topic only. Okay. Anybody else who has a question with regarding the scripting wala part, this is your chance. Ask me now. Yes, no, maybe. Sir, hi, sir. Hello. Sir, Sanya this side. I have Hi, a Sanya. question not Mm-hmm. regarding this slide, but a slide prior to this one. So, as you said that voice doesn't matter in radio or in podcast, sir, Mm-hmm. before coming to this podcast, to be honest, I believe that my voice is not suitable for podcast or for radio. And sir, like I believe in it. So, sir, how am I I'm supposed like, sir, when we all are hearing you, we can give a sense that you have worked in radio, or you have a voice suitable for podcast. So, you have a soothing voice, to be honest. So, sir, how am I supposed to like believe that I have a voice that I can work in this field? So, how am I supposed to come out of my shell, basically? अच्छा सानिया, आपको क्या करना है कि यू जस्ट हैव टू सी, आई एम गोइंग टू स्पीक फ्लैट, आई एम गोइंग टू स्पीक लाइक सानिया नाउ, ठीक है. सानिया, व्हाट यू नीड टू डू इज दैट you'll have to probably आपको घर जाना है, ठीक है, and you'll have to practice. And it is not about the voice, it is about the modulation, how you speak it, and that what makes it very important. Now you see that how this works. Sanya, does it make sense to you? Yes, no, So, maybe. so somewhat it makes sense to me, like See. how Uh-huh. you modulated your voice. That makes sense to Mm-hmm. me. But so, like in this conversation, we are we are on a very basic level. We are having a conversation. But so your voice sounds like a very soothing voice. So like See. you're not doing anything on a professional level right now. You're not Mm-hmm. performing for a radio show or for a podcast, but your voice Mm-hmm. is sounding like you are performing for a podcast. Like it's a good thing, right? But See, I'll tell you I don't think something. that I can do that, or I don't think that I can create a voice or I can fake a voice that it will have a soothing effect or people would be interested in hearing it. Sanya, I'll tell you something. I like the thought process where this is coming from. I can completely echo your thoughts. ठीक है, I completely echo your thoughts. ये शुरुआत में ना मुझे भी लगता था, ठीक है, एंड अभी जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, दिस हैज बीन डेवलप्ड ओवर टाइम, ओवर प्रैक्टिस. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो आपका नेचुरल फॉर्म होता है, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इज बेसिक. आपका आर्टिस्ट हाउ डू आई पुट इट इनटू अ वर्ड यार, इट्स लाइक योर, जैसे once you do something too much na, you completely imbibe it in yourself. It becomes like an involuntary action. जैसे कि गर्म लगते ही हाथ हटता है ना, तो when you practice too much it becomes like this. अब मैं अगर normally भी बात करता हूँ किसी से, तो it is like that क्योंकि I've worked too much into it यार.
coming down to you, you do not have a flat voice. I like your voice. You have a very professional kind of a voice. ठीक है? तो इसमें if you try to go for a show which is more about education or any serious topic, you'll do wonders into it. Now again, the thing is, if your voice is modulated in a certain way wherein you have good ups and downs in your voice, and there are good sentences to it, and there are good sentence endings to it, and there are good sentence startings to it as well, you can do very well. Yeah, just start recording about some serious topics and put in yourself, bring down your rate of speech, and you'll do good. And वंश का भी यही सवाल है, मैं तो आप दोनों के सवाल आगे सॉर्ट करता हूँ, रुको. It's time सर that we dive. Yeah, Vansh, tell me. सर एक्चुअली एक और प्रॉब्लम है स्पीड, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो आ मेरे को रहा काफी हूँ लोग आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, ROI पे आ रहा हूँ मैं, रेट ऑफ स्पीच पे आ रहा हूँ मैं, रेट ऑफ स्पीच. या सो गाइस, फाइनली व्हाट all of us has been waiting for, VOI. ठीक है? सो सबसे पहली चीज, गाइस, राइट, ब्रिंग आउट योर पेन्स एंड पेपर्स एंड स्टार्ट राइटिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. ठीक है? ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं मैं सबको. ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, इफ यू टेक इट, you'll do good in life यार, बिकॉज यही वो सारी चीजें जो मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ on a day-to-day basis and which is helping me succeed. आपको बेसिकली धीरे बोलना है और सोचना ज्यादा है, so that you can get content in your mind. Let me help you with an example. सड़क पे बैठे बैठे मैं क्या करूं, मेरे समझ आ गया. ठीक है? I have this and all these completion words बीच में आ रहे हैं मेरे, filler words यूज कर रहा हूँ. नाउ अक्सर अपने कमरे में बैठे बैठे ऐसे ही पॉडकास्ट लेते लेते मैं ये सोचा करता हूँ कि कौन क्या सीखता है और सीखने के बाद कौन उसे कितना अप्लाई कर पाता है, क्योंकि अप्लाई करना ही तो एक बेसिक स्किल है. अब ये सब मैं ऑलरेडी अपने दिमाग में सोच चुका हूँ, एंड उसके बाद में मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ. लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ, अक्सर पॉडकास्ट में बैठे बैठे, सी, रेट ऑफ स्पीच, अगर आपकी सोचने की स्पीड आपके बोलने की स्पीड से ज्यादा है, you'll do good. लेकिन आपकी बोलने की स्पीड आपके सोचने की स्पीड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज you'll run out of content to speak. That is a huge problem that most of the artists face in this time. आप स्टेज पे खड़े हो, आप माइक के सामने खड़े हो, always go down to your script, to the roots of your script at least 20 times. 20 ज्यादा हो गया, at least 10 times. मैं खुद 10 बार करता हूँ. जब तक मुझे स्क्रिप्ट याद नहीं हो जाती, I just get comfortable like wearing clothes like that. तब तक I keep rehearsing. Otherwise, there you lack number one, conviction. Number two, confidence नहीं आएगा when you're actually presenting the words. Now, you need to be respectful towards every word you speak while you're presenting a script or a statement. And now, Ansh, coming down to your question, help me with your question one more time, and then I'll come down to Sanya. Yeah. सर मतलब मेरा Vansh, भी यही sorry. So sorry. Vansh. जब बोलना स्टार्ट करता हूँ तो मतलब अभी तो मैं नॉर्मल बोल, ठीक है, नॉर्मल बोल रहा हूँ, ओके, बट मैं जब भी कुछ मतलब ऐसे स्क्रिप्ट है, ठीक है, मुझे पढ़नी है, तो मैं उसको पढ़ते टाइम मतलब मेरी स्पीड से ही होती है, लेकिन वो कभी कभी बहुत तेज हो जाता है. जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलते बोलते बहुत तेज हो जाऊंगा, फिर धीरे हो जाऊंगा, तो मतलब मेरे को इस पे मेन वर्क करना है. मेरे को किसी ने बोला भी है लाइक कि यू शुड गो फॉर आर्ट्स. मैंने कहा नहीं यार, मेरी इतनी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल सर मेरे को ना इस पे वर्क बहुत करना है कि मैं बहुत तेज बोलना स्टार्ट कर देता हूँ. वंश, देखो आपकी आवाज में ना, आपकी आवाज में ट्रेबल है. ठीक है? दैट इज गुड, आई टेल यू. नाउ इस केस में, इफ यू आर नर्वस और इफ यू आर शॉर्ट ऑफ कंटेंट और इफ देयर इज एन अर्जेंसी टू पास ऑन योर मैसेज क्विकली, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, आपका रेट ऑफ स्पीच बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब. इफ यू वांट टू डील विद ROI और ROS और रेट ऑफ स्पीच जो भी है, तो इसके लिए you'll have to practice a lot. You'll have to get into situations like that, in a situation of urgency, in the situation of emergency, जहाँ पे you know that you have to deliver quickly, but again you'll have to be effective while delivering it. Efficiency is the key, not कि कितनी स्पीड में आप information pass on कर रहे हो. आप बड़बड़ कर जाओगे, सामने समझ नहीं आएगा ये क्या हुआ मेरे साथ. It is like that. Practice. See, I'll tell you, practice, and trust me, put yourself into such situations wherein you are forced to upskill. अपनी स्किल का इस्तेमाल करो, ठहराव लेके आ जाओ, बोल रहे हो ठहरो, टेक योर ओन टाइम यार, कोई जल्दी नहीं है. देयर इज नो अर्जेंसी कि सामने वाले को वो है कि हाँ उसे जल्दी सुनना है. गिव हिम, ठीक है, तुझे जल्दी सुनना है, टेक योर टाइम स्वीटहार्ट, वेट. जब नर्वस हो जाते हैं तो आई थिंक वो मेन प्रॉब्लम है मेरा, आई गेस, मेरे को ऐसा लगता है. And आप नर्वस क्यों होते हो? Is it because that you will be your skill, not you, but is it because that your skill will be judged? Is it because of that? Yes, sir. मेरे को ऐसा लगता है कि यार
क्या सोचेंगे लोग, मैं कुछ बोलूंगा तो क्या सोचेंगे, मेरे को सोचना बहुत पड़ता है, मेरे को ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होता Brother, I'll tell you something. I proposed my girlfriend on live radio. है। सीरियसली। Seriously, I did that. ठीक है. So the thing is, it does not matter unless and until you're not afraid to make blunders. You'll never learn in life, yaar. You'll have बट to सर आई be. थिंक लाइव मतलब ऑनलाइन पे मतलब से लाइव पे आपने उन्हें प्रपोज करा, आई थिंक सामने तो सामने डिफिकल्ट है, लाइव पे तो फिर भी इजी है ना, लाइक ऐसा कुछ बोल। नहीं है ब्रो. लाइव में पूरा शहर सुन रहा है. And trust me, जो इंसान अभी I don't know how many people are there in the podcast, but the way I'm comfortable about it, I would probably be even more comfortable when I'm in front of people, because I can probably look into your eyes and judge accordingly कि what is going on with each student. बात ये हाँ, है. So it is never the fact कि I'll tell you live में you have a pressure on your head कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया, क्या मेरी डिलीवरी ठीक यस नहीं है. यस। That is. और हाँ. And आपके फ्रेंड सर्कल में क्या दिक्कत होती है कि your friends don't judge you, they accept you the way you are, yeah. So you feel that comfort over there, and you can probably blabber around, or you can make fun of things and show that emotional side of yours. I get that. And वहाँ पे आप comfortable भी होते अपनी skill present करने के लिए. But once, let me tell you, skills are never formed in comfort zones. You'll have to always come out here. I tell you something, what you can do. कहीं पे कोई मॉल में इवेंट हो रही है, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ. ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे देखो कि हाँ, गो फॉर चैलेंजिंग सिचुएशंस की यार. ओके, यहाँ पे एंकरिंग हो रही है, लेट मी गेट दैट माइक एंड लेट मी ट्राई टू स्पीक समथिंग. मैं मॉल में जाता हूँ, वहीं पे मैं देखता था अपने स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, अब नहीं करता मैं, क्योंकि अगेन मेरे if I do it right now, it's like I'm probably snatching work from someone, which is ethically not right, which I never do now. During यस my यस। learning phase, मैं क्या करता था, कहीं पे कोई लड़का लड़की एंकरिंग करे, मैं जाता था बीच में माइक लेके बोलना शुरू हो जाया करता था. इट इज जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू सी मैं कितना नर्वस होता हूँ, मैं किस स्टेटमेंट को कहाँ पे बोल रहा हूँ, कितना प्रेशर मैं ले सकता हूँ, अगर मैं कहीं फंबल करता हूँ तो हाउ कैन आई हैंडल दैट इफ आई एम पॉइंटेड विद अ विट. क्या कहते हैं विट, कैसे बोलूँ, आपका कोई ह्यूमरस किसी ने मेरे को अगर कोई sarcasm दिया है, तो how can I actually go around it and not back down. So this, you learn this not in your comfort zone, not with your friends, but actually working it out in the field. The more you're working it out, the more you learn. अरे यार, आप वो ज्वाइन करो ना, क्या कहते हैं इसकी सबसे अच्छी वो है एक्सरसाइज, क्लब हाउस. क्लब हाउस में कोई आपका सर मैं चेहरा नहीं क्लब जानता है. हाउस सर मैंने पिछले साल ज्वाइन करा था, मेरा मतलब हाँ. स्ट्रेंजर्स से बात करने का तरीका काफी अच्छा हुआ था क्लब हाउस। सी. मैंने सेशन अब अटेंड भी करे। फिर छोड़ा क्यों? सर छोड़ा नहीं है सर, मतलब मैं ओपन नहीं करता सर, बहुत रेयर केसेस में होता है जब कुछ भी नहीं Why is the question. होता। Do you lack passion, conviction? मजा नहीं है मतलब क्या है? जो करना चाह रहे हो वो मिल नहीं रहा है. सर मतलब मैं करना चाह रहा हूँ, बट मेरे को ना वही है, एक फियर है, मतलब एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यू कैन से। ठीक है, देखो ब्रदर, टेल मी वंश, लेट मी टेल यू, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यस is a सर। good thing in its own way, because it can be improved. I'll tell you, I was always scared of speaking around people. मेरा जब पहला दिन था कॉलेज का, मेरे कॉलेज के डायरेक्टर आए थे, he gave us a speech and that, and there was some issue in my class after that. And I I used to be an anchor in my school, probably very popular and all that. ठीक है, you know how that is. मैं अपने कॉलेज में आया, जब सारे बच्चे खड़े हुए, जब मैंने उनकी स्किल्स देखी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी थी, देन आई वाज लाइक, ओ यार, मैं कैसे खड़ा हूँ इनके सामने, मैं सर तो हो मेरे ही को नहीं भी सकता. हाँ, ठीक है, मैं जब खड़ा हुआ क्लास में, आई कुडंट बेयर दैट स्टैंडिंग. मेरा दिल ठंडा हो गया. एंड इट्स लाइक हार्ट बीट बढ़ गई, हाथ फ्रीज हो गए, मुंह खुल ही नहीं रहा. मैंने, ये क्या हो रहा है मुझे? बट देन you always need to choose. Do you want to live in this uncomfort? Do you want to live like this, or do you want to work on this uncomfortable situations? I started putting myself into these situations, which helped me become this what I am today, which is very important for you. Vansh, do what is uncomfortable. If you feel conscious about it, आपको शर्म आती है, you feel you have a lack of confidence, you're lacking in your skills, work it out. क्योंकि जितने आप अपने आप को इन situations में डालोगे, आपको उतना ही समझ में आएगा अपनी skills के बारे में, which is very important for you, which will help you become a better artist in the future. क्योंकि अगर आप ये सब नई चीजें नहीं सीखोगे, जब आप अपनी खुद वॉइस मॉड्यूलेशन, सॉरी, वॉइस ओवर्स करोगे, शोज करोगे, तो उसमें आप reality नहीं ला पाओगे. You won't be able to be natural, because again, you're scared of being real. That is the problem. If you're not, यस if you're सर। afraid of being real, you'll not be able to live a happy life, brother.
which is very important. And for that, you'll have to work on yourself. सर लास्ट क्वेश्चन है, if you are okay with it, can I? I'm always okay because इसके बाद सान्या की बारी है. Go on. Sure. सर दोनों को आपके इंस्टाग्राम हैंडल चाहिए, that's it. ये प्रतीक और पॉडकास्ट है ना यहाँ पे, So where ये स्लाइड की साइड में. कैन यू सी प्रतीक माय माउस? podcast? मेरा माउस दिख रहा है आपको? So wait. सर यहाँ पे ब्लैक से लिखा हुआ है ना प्रतीक और पॉडकास्ट. हाँ, यही मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्रदर, नथिंग एल्स. बहुत ही यूनिक नेम है. Thank you. Okay, Sanya, coming down to you. Yes, sir. Hi, Sanya. So, am I so far able to sort anything for you? Tell me. Yes, sir, you are able to sort. Sir, one more question I have is that sir, जैसे आपने मेरे को बोला कि मेरी प्रोफेशनल वॉइस है, थोड़ी प्रोफेशनल मतलब थोड़े सीरियस टॉपिक्स पे मैं बात करूंगी तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. तो सर मतलब आपको ऐसा लगता है कि एक पर्सन की वॉइस कुछ मतलब सर कुछ ही जगहों पे, मतलब जैसे आपने बोला कि मेरी प्रोफेशनल वॉइस है, तो अगर मैं कोई ऐसा शो करती हूँ जो थोड़ा जो ऐसी वॉइस डिमांड करता है, जो थोड़ी सॉफ्ट स्पोकन वॉइस हो या फिर सब थोड़ी मतलब एक सर्टेन काइंड ऑफ वॉइस चाहिए जिसमें, तो वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? बेसिक प्यारा था. I'll tell you something. The thing is, अभी आपने शुरुआत नहीं की है. And if you do not start, you will not know. मैं प्रोफेशनल वॉइस इसलिए कह रहा हूँ because this is a basic standing point which will help you have a basic idea of what you're capable of right now. Once you start doing your professional shows ना, उसमें भी you'll start playing with your voice. And when an artist starts playing with your voice, with his or her voice, it becomes कि इसका मतलब ये होता है he's getting confident in his or her skill. इसका मतलब ये होता है he's being confident about his skills. And once you start doing that, you'll start exploring more genres. आप सीरियस भी लोगे तो उसमें ह्यूमर अपने आप डालोगे in your own style. You know when to lower down your voice. You know when you say professional ये this effect, your voice has this effect, more of this effect. बात ये है. And if you know कि इस effect को मैं किस तरीके के शो में अलाइन कर सकती हूँ, तो you'll do wonders again. Now इसमें कई सारी चीजें आती हैं. जैसे कहते हैं you'll have to be loud and clear. See, loud and clear doesn't mean, जैसे हमारे डायरेक्टर सर ने बताया, you'll have to shout on top of your voice to gain attention. No, you'll have to be loud enough so that people can hear you. And after that, clear means giving respect to every word that you're saying. If you're not being respectful towards the word, आपकी respectful means आपको pronounce ठीक से करना है, आपको word की starting ठीक से करनी है और word की ending ठीक से करनी है, which is very important. The most primary quality of a podcaster or a voice, remove podcaster, of a voice artist is उनके pronunciations should be clear. Your grammar, आपको बोलोगे चल प्रतीक मेरी ना communication skills ठीक नहीं है, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं है, ये इंग्लिश का एग्जाम नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे योर्स द ओनली स्किल दैट मैटर्स इज हाउ यू आर डिलीवरिंग योरसेल्फ, ठीक है? हाउ यू आर कंप्लीटिंग एवरीथिंग. नाउ प्रैक्टिस वेरिएशन. हाउ डू यू प्रैक्टिस वेरिएशन? सानिया, आई विल जस्ट टेक योर एग्जांपल ओवर हियर, इस पूरे इसमें जहां जहां मुझे ठीक लगता है. वेरिएशन एज इन, मैंने अभी कहा आपको कि यू कैन गेट इनटू प्रोफेशनल एंड देन सानिया डज इट फॉर लाइक 1 year or 1.5 years. सानिया कम्स बैक कि प्रतीक, I'm done with professionals. And I want to get into something funny and something newsy, and news के साथ I want to get into entertainment. तो एक साल प्रोफेशनल करने के बाद में ना, you'll know where to play. You'll get that hang of all that right pauses to go for, or all that startings and beginnings, and spicing up your script, and where to show happiness in life and where to be sad and everything. You'll get to know that. It's completely natural, and that comes with the work. अगर आप सोचोगे मैं आज बैठ के 50 पॉडकास्ट सुन लूं या रेडियो सुन लूं, नहीं पकड़ पाओगे. You'll just get to know the delivery style of everyone. You want to learn delivery, go for any radio station, go for any podcast. समझो, see, podcast में the problem is people are not getting into your voice modulation wala part more. They're like more flat about it, because voice modulation is something which will get your audience gripped to you. Ki they'll be like with you on the roller coaster ride, which is very important for everyone. Now, coming down to your stress word, कि मुझे कहाँ stress करना है. Now, focusing on where you need to stress is a very important part, because if you're not putting the stress on the right part, you'll not be able to raise your pitch up or low based on that. I have an exercise ahead planned for every one of you in this webinar today, and we'll do it together.
Trust me, it's going to be extremely funny. Okay. Then, how to create a crowd pleasing speech. Now, artists, let me tell you something. In life, आप स्टेज पे हो, ठीक है, आपको कहा है कि present a topic. If you are presenting a topic and the people in the crowd are not listening to you, so who in the group can tell me it's whose fault? Tell me. इसमें गलती किसकी है? Is it the crowd that's not paying attention? क्या? Can you repeat the question? Yeah. If you're going ahead and making a speech in a crowd and the people are not listening to you, they are involved in their own dramas of life, then whose fault is it? Is it the fault of the artist or is it the fault of the people? Sir, I think fault of the artist, no? Yes, I think Exactly. fault of the artist. Exactly. Rule number one. Yeah, वॉइस go पे on. डिपेंड, अगर आपकी वॉइस अच्छी होगी तो ऑडियंस सामने नहीं अट्रैक्ट brother. होगी. नहीं brother. Let me tell you something. I do not glorify because ठीक है, my voice has been blessed to me due to my parents. ठीक है. I have no here in saying that. I have just worked on my skill. ठीक है. The voice is something that is inherited. It can be improved with exercises. लेकिन इसमें चार चांद तब लगते हैं जब इस पे काम करते हो, वॉइस मॉड्यूलेशंस लगाते हो एंड यू गेट इनटू कन्वर्सेशनल स्टाइल्स एंड स्टफ. राइट, दिस इज हाउ दिस वर्क्स. तो अपने दिमाग से इस कंसेप्ट को निकाल के फेंक दो बाहर कि मेरी आवाज ठीक नहीं है, दिस इज आवाज से नहीं फर्क पड़ता कुछ भी, नेवर मैटर. ठीक है. नाउ if you're in a crowd and people are not listening to you, it's because your delivery is not good. If you're not making heads turn when you're at a mall and going for anchoring and stuff and something like that, and people are not stopping, change your delivery style. लोग क्यों रुकेंगे? मतलब मैं क्यों सुनूं तुम्हें? I've got that. यार प्रतीक तू बकवास करता है, क्यों सुनूं मैं तुझे? Why should I listen to you? Tell me, what do you have? You lack style. You don't have delivery. You get all these things with people, and this is there. How do you work it out on that? I'll tell you how to do it now. Now, हमेशा एक स्पीच इस तरीके की बताओ. मेक अ स्ट्रॉन्ग इंट्रो, पंच योर इंट्रो डीप इनटू देयर हार्ट्स. हाउ डू यू डू इट? ऐड अ शायरी, ऐड अ लाइफ, क्या कहते हैं, कोई लाइफ का मंत्र दे दो आगे शुरुआत में. It'll make you look appealing. Modulate your voice, not that much that it looks fake. Be natural, be playful. The game of any artist is to be playful. खेलो, जितना खेल सकते हो अपनी आवाज से, आप उतना खेलोगे, आप उतने हैप्पी रहोगे. जितने आप हैप्पी रहोगे, आपकी हैप्पीनेस would spread around and people will actually enjoy listening to you. Whenever you're going for a voiceover, be happy about it. Put a smile on your face. Deliver. And be natural. Be natural. Do not feel कि यार don't judge yourself कि यार am I doing this right? This is arts. There is no right or there is no wrong. It is just art. You just have to accept yourself कि यार it is what it is, and what it's not, it will improve, and that it is. Now, coming down to effective pauses and crowd pleasing speech तो खत्म ही नहीं हुआ. इसमें फिर आपको make sure that your जो body है, your body is good enough and enticing enough या attractive enough and creates a hook when people get connected to you. कि यार मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे सुनना पड़ेगा, ये मैं सुनना चाहता हूँ. ये जो work out on your script part. ठीक है. एंड नो, अपने क्राउड को देख के एनालाइज करो. व्हेनेवर यू आर ऑन स्टेज, ट्राई टू एनालाइज. you get those vibes. Try to understand these vibes. ये मुझसे चाहते क्या है? अपने एज ग्रुप को देखो, आपके सामने क्या है. what is the age group? what is the mood right now? what is the weather right now? why are they here? what are they looking for? इन सारे पैरामीटर्स को लेके जब आप स्टेज पे जाओगे या आप किसी stage, I'm just talking about hosting right now. Okay, I'm not talking about celebrity interview or I'm not talking about anything. I'm just talking about public speaking right now. This is a public speaking session that is going on right now. So, in this case, you have to be mindful of everything. Ki, why are they here for? Am I going to give them what they're here for? Because everybody in the end wants to know what is it for me. क्या है मेरे लिए यहाँ पे? And unless and until they do not get what they want, no matter how good you are, if you are having good communication skills or your voice modulation or anything, it won't work out. Topic selection is very important. Again, ending correctly to say it is very important. एजा चाय लेके आ या फिर प्लीज चाय ले आओ आप. So being respectful,
These things will help you gain more audience. The more respectful you are towards your audience, treat your audience as your guests. Always remember that. If you can do that as your guest, half of the battle is done. Because when you're respecting someone, आपका बात करने का लहजा automatically change हो जाएगा. You'll be at your best behavior. You'll smile, you'll giggle, and you'll be funny in all the ways that is always above the belt. And this will help you gain success. Now, coming down to effective pauses. आप बोल रहे हो, ministers probably when they speak they take कि अरे कुछ बोलो आगे, I'm waiting for you. That is the effect that needs to be created while you're speaking, that people want to listen to you, they're craving for you कि बोलो. That needs to be created. Now again this can be created with effective hooks. If you can create a good hook in your speech, this is achievable and this can be done. Now, avoid using slangs like lingos. ठीक है, ये नहीं यूज करना है हमें. लिंगोज की मैं क्या बोलूँ, व्हाट आई फील अनकंफर्टेबल यूजिंग देम. तो क्योंकि मेरे आई हैव प्रॉब्ली टेकन देम आउट ऑफ माय वोकैबुलरी, या अपनी शब्दावली से मैं उनको एकदम बाहर निकाल चुका हूँ. एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम. जैसे कई लोगों की आदत होती है हर 3-4 सेंटेंस के बाद दे कर्स. सो दैट इज समथिंग दैट needs to be taken. और हमारे भारत में तो there is a common word that everybody uses. I'm not going to use it. I've always referred to it. telling me. I know. So this is something that needs to be worked upon. Because I'll tell you why. Supposedly you're hosting a show, because that becomes an involuntary habit. Okay. And when you're getting into that sort of a habit, what happens is, when you are trying to say something, या कुछ pressure आया, वो अचानक से shoot हो जाएगा मुंह से. And you don't want to happen in front of a crowd of 1 million. You'll be put off air and your career is finished. आपका खुराफाती नितिन था, तो उसमें देयर इज दिस थिंग. व्हाट हैड हैपेंड वाज, इंडियन आइडल में चैंग जब जीता था, तो ही सेड दैट ऑन रेडियो नेपाली को कि ऊ शाबजी जीत गया और समथिंग लाइक दैट. ही वाज पुट ऑफ रेडियो for whole 2 years. He had no work, no radio station gave him work. This is the level of responsibility an artist or a speaker has, that he needs to see, because seeing such a thing will actually bring down the brand value. अब बोलोगे प्रतीक यार यही तो बोला, कैसे ब्रांड वैल्यू गिर जाएगी. अब सोचो बाकी जो नेपाली इंडिया में रहते होंगे, उनकी कम्युनिटी को हर्ट हुआ है कि यार वी आर ट्रीटेड लाइक दिस. People can think, people have their own minds, they can think whatever they want to think. It's a free country and nobody can stop. And if you feel ki views don't matter, then trust me, you're in the wrong field if you feel like that, because views do matter. And it is the views that will give you work. Okay. Now coming down to sound enthusiastic and confident. All right, guys. Enthusiastic and confidence. Enthusiasm has a lot to do with your mindset and with your mood. If you're happy, you'll always be enthusiastic. Enthusiastic मैंने क्या, खुश हो यार अपने आप से. You're happy about getting this opportunity. Like, I'm very happy and I'm very grateful that I got this opportunity. So I'm giving my whole into it. I know that I'm probably above time and it's more than time, but all No, right. sir, we're enjoying it. Don't worry. I hope you guys are enjoying it, but I just lost track of time with this. Because this is what I do in my sessions. I enjoy giving them, and this is what it is. So if you're on the stage and you're loving what you're doing, like intently, कि यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करते, when you're enjoying yourself, people will grab that, people will echo your thoughts, people will absorb your energy, and they'll also feel euphoric like you. This is what will happen. Sound confident. How will you sound confident? The only way to sound confident is always practice on your speech. Always. ये बोलो कि मैं एक रात पहले बैठ के करूं, नहीं. अगर आपको एक रात पहले करना है, चलो एक रात तो बहुत टाइम हो गया खैर, लेकिन आप बोलोगे मैं स्टेज पे जस्ट जाने से पहले भी पढ़ रहा हूँ, ट्रस्ट मी, you'll make a blunder out of it. Don't go on stage. Don't go on stage. I'll repeat, don't go on stage. You'll create a blunder out of yourself. But yes, again, if you want to be into that situation and you want to play, do it. I've done that. Yes. And this will help you gain the insight ki how supposedly you're taking the name of a esteemed faculty member and you mispronounce it in the crowd in front of 200 people. And you get nervous. Ab chup ho gaye. No, brother, that's not going to work. You're alone. You're handling the entire event. That's not going to work out. Work it out. You know you're nervous in front of the people. Your script is unprepared. What do? धीरे धीरे पढ़ो अपनी स्क्रिप्ट को.
understand what you're doing. But see, this is a spot where you do not want to be in life. I had done this mistake once in college. I make sure that I never do it again. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, इसका शिकार था मैं, ओवर कॉन्फिडेंस का, तो ये दिक्कत हुई थी. After that, I had always practiced my scripts at least 10 times. Play with your script. The more you play, the more confidence you'll build. It is like सर riding a bike. हेलो, Hmm. हाय, सॉरी टू Go on. इंटरप्ट, मैं फिर से Not at इंटरप्ट all. बोलते हुए. Not at all. It is your right to interrupt me. Please go on. Okay, sir, जैसे see, I have a habit of talking to myself. Is that good? That is good. It depends how you're talking to yourself and what are you talking to yourself. If you're talking good to yourself, that's better. And if you're Sir, everything. positively, Talking about हाँ तो everything. ठीक है ब्रदर. सी ब्रदर, अगर आप अपने आप से बात कर रहे हो, वंश, राइट, वंश, Yeah. सो वंश, अगर आप अपने आप से बात कर रहे हो, डिपेंड्स हाउ यू स्पीकिंग टू योरसेल्फ. you'll have to get into a completely different personality. You'll have to shed the personality you're having right now, and you'll have to enter a different one altogether. Your body language will change, the way you talk, the way you speak will all change in 15 days, 20 days, 1 month. It took me around good 6 months to change myself from being a boy, from being just a law graduate or a law student into someone who's into media. Okay? Because I genuinely enjoyed that. बात ये है. So इट डिपेंड्स, कंप्लीटली डिपेंड्स हाउ हार्ड यू वर्किंग. अगर आप अपने आप से बात कर रहे हो, आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हो. इफ यू मॉड्यूलेटिंग विथ योरसेल्फ व्हाइल यू आर अलोन, डू इट ऑन द माइक. अकेले से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी. आप अपने आप को सुन नहीं पा रहे हो, इसको आप रिक्रिएट नहीं कर पा रहे हो. अगर आप रिक्रिएट नहीं करोगे, आप अपने आप को सुनोगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बताने वाला तो कोई है ही नहीं, और कोई बताने वाला ही नहीं है. तो Like asking questions, मतलब खुद ही बात करना, खुद ही जवाब देना. नहीं, वो ठीक है. सी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. We always need expert advices when we feel that we are the experts. It's okay. There's nothing wrong in that. Okay. Okay. Okay, you're not convinced. Tell me, what is it that you're expecting? नहीं नहीं नहीं, So- it's okay. no, it's not okay. It's not okay with me. I feel like I'm not doing my job properly. मैं कन्विंस नहीं था. ओके I know. सर, पता है मुझे. मतलब मेरे को ऐसे किसी ने बोला है कि लाइक इफ यू हैव योरसेल्फ देन यू शुड गो फॉर थेरेपिस्ट. मैंने कहा यार क्यों यार, लाइक Oh क्यों God, जाना. यार. See, सर लाइक वो I, चीज सच में बोला है लोगों ने मेरे को ऐसे कि भाई खुद से बातें करना इज नॉट गुड, ठीक है, Mhm. एंड तू जा थेरेपिस्ट के पास, मैं तेरे को इसका नंबर देता हूँ. मैंने कहा भाई मैं ओके हूँ, मैं ठीक हूँ भाई, दिस इज मी. So see, once you will have to accept yourself. Accept. See, going around, ये मैं ना लाइफ कोच वाला ज्ञान दे रहा हूँ जो मेरे को नहीं देना चाहिए सेशन में फिलहाल. The thing is कि चलेगा. you'll have to be. No, it's okay. It is my duty to do that. I'll do it. The thing is that you'll have to accept the way you are. If you go around, run around if you run around people for validation, you'll be nowhere in life, because no matter how good you do, your skill set or your belief system will always be based upon the people around you and they validating you, which is going to hinder your success. You'll learn this after college. Trust me, you will. Not now, after college. Cool. Yeah. You talk to me on Insta, I'll tell you. I've already. Sure. Okay. All right, now, guys, coming down to this. Now, the fun part. So, there was this girl in this batch or in this webinar who told me कि प्रतीक, जब मैं आवाज लेती हूँ, whenever I speak, वो सांस की आवाज आती है. All right, let's work it out. What was your name? Could you please unmute yourself? Sir, Yes. Umme Hani here. May I have your name, please, one more time? If you could please help me with your name. Umme Hani. Okay. All right, मैम. Thank you. The thing is, तो ये हमारे सामने एक एक्सरसाइज है अभी, ठीक है. हमें ये साथ में बोलनी है. Q E Q R Q E Q R. आपको अपना मुंह खोलना है. दिस इज बेसिकली ये आपकी ये जो मसल्स है यहाँ पे, ये वाले, इन मसल्स को रिलीज करेगा. जब भी आप इसके लिए जाओगे, जब आप इस एक्सरसाइज करोगे, तो देखो मैं पहले सांस ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ. Yes, देखो, sir. क्यों बोलो. क्यों? क्या आपने इससे पहले सांस लिया? Yes, sir. लिया सांस. जब आप रिकॉर्ड करोगे, क्या ये आवाज सांस की आएगी या नहीं आएगी? यस और नो? नहीं, ये नहीं आएगी. आएगी. ये आवाज आएगी, ठीक है.
इस आवाज को आपको काट देना है, जहां से शुरू होता है क्यू क्यू क, बेसिक इंस्टिंक्ट जहां से हल्के से आवाज ऊपर जा रही है, ठीक है, वहां से काटना है आपको इसको। क्यू ई क्यू आर, ये एक्सरसाइज बेसिकली इसलिए है सो दैट यू कैन ओपन अप योर डायफ्राम, यहां से अपना वॉइस बॉक्स खोल सकते। नाउ इज दिस क्लियर टू यू? इसमें मेक श्योर क्यू, जब भी आप बात कर रहे हो आपकी जो टंग है आपके लोअर जॉ को टच करनी चाहिए, यानी कि हियर, it should touch over here, here. Now everyone, anybody who would like to volunteer with me? So what we have to do? I Okay, So I am interested. I am all right, go interested. on. All right, so let's do this together. We'll copy each other. Just मुझे follow करो। क्यों मुंह ऐसे, क्यों नहीं, Q. क्यों, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों। There's a difference between क्यों and क्यों। Q. Understand, guys, एन understand, लगा करके focus। बोलना है। टंग, एन मतलब यूज नहीं करना ना, बेसिकली यही है। हाँ, हम हिंदी का जो क्यों होता है ना, नेजल साउंड नहीं है इसमें, देयर इज नो नेजल साउंड, क्यों। क्यों हाँ, राइट, क्यों गुड, क्यों। क्यों अब इस क्यों, जैसे क्यों को आपने बहुत स्पीड बोला है, नाउ वी इलोंगेट द क्यों, लाइक क्यों, क्यों क्यों नहीं। Q. नहीं गाइस, नहीं, अंडरस्टैंड, यू गॉट टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट साउंड्स। दिस इज योर जॉब एज एन आर्टिस्ट टू बी स्पेसिफिक अबाउट साउंड्स। सी दिस, क्यों, क्यों। क्यों मैं भी नाक बंद करके ही बोलता हूँ क्यों, Q. तो क्यों से आवाज आ रही है। क्यों Q. इट इज नॉट, Q. देखो, हम के वाई यू क्यों वाला सवाल नहीं पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं क्यों। Q. क्यों Q. Right. तो Q. ठीक है, यू बिंदी यू बिंदी साउंड नहीं आनी चाहिए, वो बिंदी नहीं आनी चाहिए ना। वो बिंदी नहीं आनी चाहिए, नेजल साउंड नहीं आनी चाहिए, क्यों? ठीक है, हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ वॉइस एक्सरसाइज दैट वी नीड टू लर्न, एंड गाइस थिंक, जो सुन रहे हो फुल अवेयरनेस के साथ सुनो आप क्या सुन रहे हो, एंड देन रिप्रोड्यूस इट। इफ यू नॉट एबल टू फोकस ऑन व्हाट यू आर लिसनिंग, इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू ई। ई, जब ई करते हैं मुंह खुलता है, ई, ये जीभ यहाँ नीचे नीचे वाले जॉ में टच होनी चाहिए, ई, ठीक है। यहाँ यहाँ जोर आएगा, यहाँ ई, ये देखो ई, ये यहाँ जोर आ रहा है, नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस योरसेल्फ, मेरी बात मत मानो, मैं शायद गलत बोल सकता हूँ, प्रतीक बकवास कर रहा है, चलो लेट्स टेक इट दैट वेज, खुद करके देखो, टेल मी दैट, शो मी दैट। Once you were practicing, and I guess there was another girl who volunteered, अनन्या। यस सर Ananya, yeah, उम्मे उम्मे अनन्या। Umme and Ananya. Come on guys, all three of you do it, I'm here listening to you. Yes. E. ई ई Good. नहीं, ई छोटा नहीं करना, ई मसल्स बड़ा बोलना है। मसल्स आती है। ई राइट, हाँ, ये आर, आर, आर। ये यहाँ आर से आएगा सारा, आर यहाँ से जोर आएगा पूरा, ठीक इट्स है। नॉट आर, इट्स आर, आर राइट? आर, आर आर, ऐसे, ठीक है, इट इज लाइक दैट। नाउ वी कम डाउन टू, अब मैं ज्यादा नहीं करूंगा, ये ज्यादा फनी हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी कम डाउन टू हमिंग साउंड्स। अब हमिंग के लिए मैं अभी म्यूजिक बंद कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज हमिंग इज समथिंग विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। जब भी आप अपने व्यू के लिए जाते हो, there's this girl in the group who wanted to go for cartoons and stuff, especially for you, madam. Whenever you go, there are two ways to hum, ठीक है, I'll show you. So there are two ways to hum. The first one is high pitched and the second one is low pitched, जहां की आप अपने बेस से बोल रहे हो, ठीक है, I'll show you. पहले तो ऐसे होता है, अब देखो मेरी पिच नीचे गई, पता चला कि नहीं पता चला, ये सिर्फ सांस की आवाज थी, पता चला, मतलब अप पता डाउन चला। कर। इट्स साउंड्स लाइक ओम विद हाँ नहीं नहीं नहीं, ये ओम नहीं है, ये ओ का जो म जहाँ पे म खत्म होता है म ना, या म जहाँ म को हम एंड कर रहे हैं, ये म का है, ये हम म की प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। Let's get that again. मैं अपना हाथ ऊपर नीचे करूंगा, ठीक है, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो हाथ ऊपर करूंगा, नीचे आऊंगा तो हाथ नीचे करूंगा। It is like that. The lower you go,
आप वहां से बोल सकते हो, या अब डिपेंड्स कि आप कहाँ से बोलना चाहते हो, ठीक है, आप किस लेवल पे आगे बोल सकते हो। अगर आप चाहते हो तो आप और ऊपर आगे भी बोल सकते हो, अगर आप चाहते हो तो नीचे से भी बोल सकते हो, ठीक है, इट इज लाइक दैट, ठीक है। सर आई आई होप वांट दिस टू इज आस्क कि क्लियर। जब आप कर रहे हो तो वाइब्रेशन कहाँ आनी चाहिए? लाइक पेट में या पीछे वाइब्रेशन पीठ यहाँ पे, बैक यहाँ पे? यहाँ, नहीं नहीं, वाइब्रेशन यहाँ आएगी। एंड सर दिस इज अ एक्चुअली वेरी यू आर गुड नॉट क्वेश्चन। विजिबल। ये क्वेश्चन किसने पूछा पहले, ये बताओ मेरे को। अनन्या, अनन्या जी। अनन्या, ग्रेट। अनन्या, सी द थिंग इज, जब ये यहाँ से आएगी, एंड वेन एवर यू आर स्पीकिंग, हमें हमेशा हमेशा हमेशा, आज एक बहुत प्रो टिप दे रहा हूँ मैं, इसको अपने साथ हमेशा रखना, टेक इट अवे विथ यू, इट विल हेल्प यू। हमेशा अपनी नाभि से बोलना है, हमें हमें अपनी कमर सीधी रखनी है वेन एवर यू आर डिलीवरिंग, ठीक है। अगर आप अपनी नाभि से बोलोगे, इट विल मेक योर वर्ड्स मोर इम्पैक्टफुल। हमें लीन नहीं करना है, स्लाउच नहीं करना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट रूल नंबर 1। अब बोलो अनन्या, आस्क मी व्हाई, just do not accept anything that I say. If you do not ask questions, it will be like Gyan. I'll tell जी you सर। why. There's a scientific reason to it. Our esteemed director sir had also mentioned this fact while addressing this webinar today, which is, अगर आप ऐसा करते हो तो the problem is कि जो आपके जो muscles हैं body के, they'll be deformed as in, sorry, they'll be not in a right shape to produce a specific sound, and when that happens, you're not going to achieve the desired result. That is the reason why. एंड ठीक सर है, नाभि से बोलेंगे कैसे? लाइक गुड क्वेश्चन। जब आप बोल रहे हो तो हमें हमें जो जोर है अपने गले में नहीं लगाना है। जैसे हम सांस लेते हैं, आप सांस कहाँ से लेते हो? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू टेल मी। आप सांस कहाँ से लेते हो? सब मैं तो आई मीन मैं तो गले, मतलब मुंह से भी और नाक से भी, क्योंकि ऑलमोस्ट सर्दी का टाइम चल रहा है तो जुकाम वगैरह होता है। आई अप्रिशिएट योर सर जब माइंडसेट, इनहेल अप्रिशिएट योर करते हैं मतलब पेट में भरती है ना, लाइक उसमें पेट में वो भरती है, राइट। एग्जैक्टली। छोटा बच्चा देखा सोते हुए आपने, वो पेट से सांस लेता है ना। यस सर। यस। यस। एग्जैक्टली ऐसे ही सांस लेनी है। ऐसे सांस लोगे आप रिलैक्स्ड रहोगे। अगर आप रिलैक्स्ड रहोगे आप स्टेबल रहोगे। अगर आप स्टेबल रहोगे तो पॉजेज आएंगे, पॉजेज आएंगे तो डिलीवरी अच्छी होगी। दिस इज द गोल। तो और यू अगर मीन टू आप अगर हम मुंह से सांस ले? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पेट से सांस लो। ठीक है। कुछ नहीं करना है ब्रदर। ऑल यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू सी अ बेबी स्लीपिंग। यूट्यूब करना, सी बेबी स्लीपिंग वीडियोस, यूल सी कि बच्चा जो होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो पेट से सांस लेता है, एंड you'll be able to do that, you'll be able to achieve it. ओके। It is as simple. See, ये चीज मैंने भी जब मैं आरजेइंग कर रहा था, when I was like 3 months into radio, तब मेरी मैम ने बताई थी मेरे को। तो आई हैव बीन फॉलोइंग इट सिंस देन। ये जो पूरा जो सेशन है जो मैं लिया है, आई एम बीइंग स्ट्रेट अबाउट इट, लाइक यू गाइस आर टेलिंग कि वॉइस मॉड्यूलेशन भी हो रही है एंड ऑल दैट, बिकॉज इफ आई स्लाउच आई विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट लेवल। वो कहीं ना कहीं दबाव पड़ जाता है, प्रॉब्लम ये डायफ्राम में, एंड दैट इज नॉट राइट। यू डोंट वांट टू प्रेजेंट दैट, दैट इज द थिंग। सो टेल मी, एनी मोर डाउट्स? बेसिकली सर आप कह रहे हो कि जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो आवर स्टमक शुड बी गो आउट एंड इन। Exactly, this लाइक is what I mean. जब हम लोग Exactly. नॉर्मली लाइक अभी भी लेते हैं बट हल्का हल्का होता है, बट जब हम पेट से लेते हैं आई थिंक हमारा तब थोड़ा सा वो ज्यादा होता है। राइट, थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जब आप बोलते भी हो ना, जब आप बोलोगे तो आपको एक्सटेंसिवली ब्रीथ करना पड़ेगा, और वो होता है आपका जब आप देखो, अगर आप देखो ऐसे बोलोगे तो मैं ऐसे बताता हूँ, बट द थिंग इज व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, और आई हैव टू बी इन पर्सन, दैट इज द थिंग, और योर फैकल्टीज विल हेल्प यू टू दैट, ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन। ओके सर। सो गाइस, आई टेल यू, ब्रीथिंग के लिए ना, इट इज लाइक यू हैव टू पेट से सांस लेनी है। अब पेट से सांस कैसे लेनी है? नाड़ी शोधन करो। These breathing exercises are very important. They'll help you build stamina. They'll help you know कि कहाँ हवा टच कर रही है, जहाँ से एक स्पेसिफिक आवाज आ रही है। Unless and until you do that, you'll not be able to learn that, which is very important. अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैं नाभि से बोल रहा हूँ, and this becomes a habit after constant repetition पे repetition. This will become a habit, like an involuntary action, I must say. ओके। But if you can try this. I mean, there are I have ways to tell you, but the thing is, those ways would not be appropriate to appropriate. जैसे आप बहुत भागते हो supposedly,
ठीक है, आप बहुत थक गए हो भाग के, एक पॉइंट आएगा जब अपना मुंह खोल के आप अपने पेट से सांस लेते हो, देयर इज अ पॉइंट कि आप सब भूल जाते हो एंड यू यस जस्ट सर। ब्रीथिंग हेवीली. It is that part where you have to breathe naturally but not that aggressively. You have to be breathe naturally, and again after that you'll gain that control, you'll get that awareness कि हाँ ऐसे breathe करना है. So whenever you're going for a radio show or any hosting, नाभि से सांस लो. वो आपको, it will actually keep you calm, it will keep your brains right, which is very important for an artist. People do get intimidated, yeah, when you see that there's a huge crowd in front of you, you have that expectations. So these are a few techniques that will help you. पतंजलि का सरस्वतारिष्ट आता है, आप वो पी लो, it will also help you loosen down a bit, it will clear your voice as well. It's a good thing, google it. जिंजर हनी प्रमोशन नहीं बेस्ट। कर रहा हूँ मैं, सरस्वतारिष्ट, and trust me it tastes awful. ठीक है. सर Yeah. उससे ज्यादा सही तो मतलब जिंजर हनी का पेस्ट होता है ना, लाइक। Yes, ginger, honey, and उसमें आप गर्म पानी डालो. This is also good. You can do that. एक आपका कमल सर एक कंठा आता है, मुलट्ठी आती है, मुलट्ठी मुलट्ठी आती है एक। वो ले लो यार. कुलट्ठी, ये मैंने वर्ड पहली बार सुना है. सर मुलट्ठी बोलते हैं बेसिकली उसको, येलो कलर का समथिंग स्टिक जैसा होता है, बट वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आई यूज्ड टू डू सिंगिंग ना, देन मैं हम्म. रात को लेके सोती थी और सुबह भी मतलब ऑल टाइम जब होता था तो वो रहता था माउथ में। बहुत इफेक्टिव होता है वो। अब देखो, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड. एग्जैक्टली। You know, either you compromise on sleep or you compromise on taste or find out a good recipe. चलो, एक्सक्यूज मी I'll. सर, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे पूछना था नहीं, क्वेश्चन आंसर कि राउंड होगा. आई वाज जस्ट अबाउट टू कंप्लीट एवरीथिंग, बट यस प्लीज गो ऑन प्लीज. सर मुझे ये पूछना था कि आप क्या सजेस्ट करते हो कि हम लोगों को क्या सुनना चाहिए, और लाइक कुछ ऐसा स्पेसिफिक कुछ है लाइक पॉकेट एफएम या कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक जो आप बोलोगे जो हमें हेल्प कर सकता है किसी भी वे में, वॉइस ओवर में या किसी भी वे में? सी आई टेल यू, यूट्यूब पे यू कैन गेट वॉइस ओवर्स की मास्टर क्लास, ठीक है, आप उसको देखो. फिर आप रेडियो सुनो, पॉडकास्ट सुनो. बट ये सब सुनने से आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया होगा. आपका फर्स्ट फेज होगा कि आप उनको पहले कॉपी करोगे. दिस इज व्हाट हैपेंस. फर्स्ट थिंग इज दैट यू कॉपी पीपल. नेक्स्ट फेज इज दैट यू स्टार्ट राइटिंग डाउन योर ओन स्क्रिप्ट एंड देन यू स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग. तो आप रेडियो सुनो, पॉडकास्ट सुनो. आप मेरे को बोलोगे कि प्रति कोई शो सुनो स्पेसिफिक, तो आई वुडंट एडवाइज एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट. जस्ट लिसन टू एनीथिंग दैट यू फाइंड इज अपीलिंग टू यू. And to be honest, आज के टाइम में the RJs whom I hear, they have lack of voice modulation. To be honest, I don't. बट सर आरजे प्रवीण तो लाइक ही इज सो गुड ना। You know, RJ Praveen Calcutta say he's good. He's very Yes. funny. He's witty. I get that, but radio, what it used to be on Doordarshan long time back, because my trainer who had trained me, she was from Doordarshan. She was from community-based radio stations. So the way she had taught me voice modulations and the way a show should be presented over radio, तो वो चीजें अलग है जो अब कमर्शियल टाइम में दैट हैज लॉस्ट द एंटायर टच. प्रॉब्लम ये है. तो अगेन इफ यू, बिकॉज अभी आप देखोगे तो यू लैक द पीपल लैक दैट वॉइस मॉड्यूलेशन, एंड यही एक चीज है जो मोस्टली आरजेस नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में. And if you meet RJ Divya, I knew her because we did a show together. So उनका आता था माँ बहन का शो. She is doing nice. गिन्नी को सुन सकते हो आप. गिन्नी is doing nice. And 92.7 Big FM में there's Pratik, RJ Pratik है. You can listen to him. There are these 2-3 people I would recommend. And जैसे खुराफाती नितिन है. He's nice, but again, I feel, yeah, okay, you can listen to him as well. I don't mind. ठीक है. If you are starters and stuff, it's okay. Because coming down to the line, जब आपको खुद एक्सपीरियंस होगा, आप खुद सीख जाओगे, आपको खुद को समझ, आपको अपनी एक आपका टेस्ट डेवलप होगा. You'll have your own understanding about things कि how do actually things work out, which is important for you to understand as well. So yeah, this is it. सर यू आर टॉकिंग अबाउट मास्टर क्लास, तो मैंने कुछ ली थी, तो उसमें ना आई सी कि उन्होंने थोड़ा सिंगिंग पे थोड़ा फोकस डाला. लाइक आई टोटली अग्री कि जो सिंगर्स होते हैं, मतलब ऑब्वियसली मतलब वो जो राग होते हैं ना, सा टू सा, वो उस पे थोड़ा लाइक आई टोटली अग्री कि जो सिंगर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा वो हो जाता है क्योंकि उनकी पकड़ होती है. बट इज इट Right. इम्पोर्टेंट आपका सिंगर होना जरूरी है? लाइक नहीं, आपकी बिल्कुल भी नहीं सिंगिंग है. अच्छी है? मैं गाता नहीं हूँ. मैं बिल्कुल नहीं गाता हूँ. मैं सिर्फ अपनी एक्सरसाइजेस करता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ मैं, और साथ में मैं फिर उसको रिक्रिएट करता हूँ. ठीक है.
रिक्रिएट एज इन मैंने बहुत सुना, सबको सुना, उसके बाद में फिर लेकिन एक बात याद रखना, इट इज लाइक डेवलपिंग योर ओन स्टाइल एज वेल, ठीक है? इट इज नॉट अबाउट कि आपने किसी को सुना एंड मुझे उसके जैसा डिलीवर करना है, यू विल नेवर बी एबल टू डू दैट, ठीक है? यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्टाइल, which takes time. I took my time to understand my style कि भाई मेरा डिलीवरी स्टाइल ये है, मतलब ठीक है, दिस इज माय डिलीवरी स्टाइल. Then this comes with time again. That is the thing. You cannot expect that thing to come up in 2 days or 3 days or 4 days. नहीं यार, it is persistence. Persistently, you'll have to work hard for it, यार. Okay. Thank you, sir. Most welcome. Am I able to sort this for you? Yes, no, or maybe? Please help me with an answer. Yes, sir. Do it like you puke it में. Let me show you how. यहाँ पे जब भी आप प्यूक करते हो, इट्स लाइक ऐसे करते हो, ये जब ऐसे करते हो तो नीचे से ये सारे आपके जो मसल्स है यहाँ के, ये सारे ये खींचते हैं, राइट? So basically nausea now. You can do that, you can say that. It is just like this, ठीक है? Whenever you're doing it, you can do this, like you do it like this. Then coming down to the next one, which is yawning and sighing. जब आप यॉन करते हो तो अपने गले में जो आपका जो वॉइस बॉक्स रहता है, आप उसको रिलैक्स कर रहे हो, साई कर रहे हो, साइंग, ठीक है? तो इट इज लाइक यू जस्ट कामिंग दीज मसल्स डाउन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू इन अ रिकॉर्डिंग सेशन. आपने 5 मिनट का एक रिकॉर्डिंग सेशन तो कर लिया, 10 मिनट का, इट डिपेंड्स अपॉन आपकी आपका स्टैमिना कितना है, आपका जो वॉइस बॉक्स है, हाउ मच लोड कैन इट टेक एट द मोमेंट राइट नाउ. साथ में ये भी आता है कि व्हाट इज द लेवल आपने अचीव किया है अपने आप में कि यू कैन कंटिन्यूसली स्पीक उस उस सेम स्ट्रेंथ में, उस फॉर्म में that you are able to deliver. Now this comes with breathing exercises. I would probably recommend guys, if you could probably get into pranayam, surya namaskar or pranayam. This will help you gain that uh, strength or stamina which is required. क्योंकि आपको कई बार लंबे सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, एक ब्रेथ में चीजें बोलनी होती है, just to make it sound more impressive. So how do you achieve that? And apart from that, उस एक breath में ही आपको साथ में you'll have to make it impressive, you'll have to make the voice modulations, you'll have to sound wacky. How do you do that? This is how it's done. I'll recommend everyone, if you could probably write down a script or go impromptu, complete impromptu, 1 मिनट के लिए blabber. Blabber as in कुछ भी बोलो, लेकिन 1 मिनट तक रुको मत. इससे आप अपनी ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो टू पिक कंटेंट फ्रॉम एनीवेयर, लाइक पिकिंग कंटेंट फ्रॉम एयर. द डे यू आर एबल टू पिक कंटेंट फ्रॉम द एयर, यूर अ स्टार. सर आपको मैं कोई नहीं मतलब रोक सकता. 1 मिनट तक लगातार. 1 मिनट तक लगातार, क्योंकि ये मैं खुद करता हूँ. दिस इज व्हाट आई डू एट टाइम्स. जब मैं कुछ करने को नहीं हो रहा, इवन आई एम सैड और एनीथिंग लाइक दैट, मैं चल यार, लेट्स मेक माई सेल्फ हैप्पी. इट्स जस्ट I just start representing or recreating anything which is inside, which is in front of me. Abhi I have this aquarium right behind this laptop, and I just speak because this will help you sharpen your skills even more. आप देख रहे हो कि जैसे उस urge of, जब वो urge आती है आप में emergency की, तो उसमें what are the kind of words that you're using? How are you pronouncing those words? What kind of pressure are you feeling? And are you ending a sentence clearly? Are you taking the right pauses? Are you, आपका लहजा क्या है, ठीक है? एंड इन सारी चीजों पे हम आते हैं, फिर कितना engaging है. तो you get to know a lot of stuff about you when you do that. रिकॉर्ड कर लो उसे, अपने फैकल्टीज को भेजो, अपने दोस्तों को भेजो. सेंड पीपल whom you feel comfortable sharing your content. पोस्ट इट ऑन Instagram. चेक योर क्या कहते हैं, check yourself कि कहाँ कितना मेरे views आ रहे हैं, what I could do better, because this is what I used to do. I used to put it जैसे, this is what I used to do for जागरण media. I used to put up my entertainment news, check कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने नहीं सुना, what can be improved, again coming back to it, working on my views and everything, delivering it in a certain way, picking up the right topics, putting the right hashtags, everything works out here. It depends on the right approach always. Got it. Thank you. Anything else you want to share, sir? Anything else, sir, you would like me to help you with? Please tell me. I'm here to help you. Sir, I'm not getting questions now. Like बहुत ही बोल दिया तो.
कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर पूछना, no sweat. So yawn and sign are done. Now I'll move towards the final parts, towards these exercises. All right, Ansh. Sorry, Ansh. Yes. I'm really sorry for the name, yaar. I'm really sorry. I apologize on this forum. Okay, so here are a few words जो अभी जितने जितने स्टूडेंट्स के मुझे नाम याद हुए हैं. So there were 4 students all together. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विथ यू. तो हम हे न्यूट्रली बोलेंगे, हे डिसइंटरेस्टेडली बोलेंगे, अथॉरिटेटिव, एग्रेसिव. चलो मुझे कुछ बोल के दिखाओ. So Since I'll you are say normal. nervous, Okay. I'll say see, normal. since you're nervous, let's probably take this thing out of you today. ठीक है, चलो बोलो. I'm waiting. So who's gonna start? But You who's going to start? Because okay. you're the guy who needs improvement right now, right? Even I'm the guy who needs improvement though. Come Sir, on, can I go start? ahead. No, I want Vansh to start. Okay, He'll okay. start. You're confident enough. He needs to Uh, develop this. okay. So first normal hi. ठीक है. Hey. Mhm. Like hey. Authoritative. Hey. Excited. Hey. तो सर अब मेरे को बाकी वर्ड का थोड़ा सा मतलब लग रहा है एग्रेसिव का अथॉरिटेटिव का तो कंफ्यूज. Okay, let me help you. Let me help you. No Let me problem. help you. Okay, चलो आप बोलो. Yeah, there was a girl who wanted to volunteer. Please go on. Sir, Ananya here. Ananya here. Ananya, please go on. Sir, neutral, I think, hey. Disinterested, hey. Aggressive, hey. Nahi. Sorry. Yeah, Excited, right. excited, hey. Like this, maybe. Mhm. And disinterested, I have done authoritative, hey, Mhm. maybe. And rising and enthusiastic, I am confused. I'll first begin with neutral, like hey. Okay, this is like normal. Hey, this, hey. Now see, इसमें जो breathing वाला part है ना, your breath plays an important role in your mood. ठीक है, tone तो है ही है, but how you are portraying it matters a lot. ठीक है, hey, ठीक है, थोड़ा tiring सा हो सकता है कि ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा. It is like that. Now we come down to authoritative. Hey, aggressive में hey, ये आ गया राइजिंग. Hey, ठीक है, enthusiastic. Hey, excited में and enthusiastic would sound almost the same. You see that you'll have to be, do not shy away from expressing your emotions. Number one, which you need to learn in voice modulation. शर्माओगे तो जिंदगी में नहीं बढ़ पाओगे. ठीक है, because you are entered into a field where there is no place for consciousness at all. Now, Yeah. Ananya, I want you to do this, please. Okay. So, neutral, please. Authoritative, please. Forcefully, please. एक बार मेरे को बताओ अनन्या, आपको जल्दी किस बात की है? आराम से बोल. आपको कहीं बाहर जाना है क्या अभी? No, Is no, no. somebody waiting for you? You will have a cab or something like that? आराम से नहीं. बोलो. Take your time. Respect every word. Respect is very important for every word, because if you're not able to respect a word, you'll not be able to deliver that word. Keep that in mind, please. Okay. Please. Authoritative, I need please. energy. I need energy. Where's the In a, energy? in a authoritative. In all of them. जिसे हमने please बोल के खत्म कर दिया. Okay. नहीं. Okay. Please. Now And you're being forceful. yeah. See? I'll show you. I'll show you. Please. ये बताओ ये Please. कौन? हाँ, नहीं ये जोर लगा रहे थे आप. You were being again forceful and begging at the same time. ठीक है. I was just begging you. Please. ठीक है. ये जो किया मैंने, this was like that. ठीक है. Now pleading. Please. ठीक है. I'm going a notch below than the bar. Rising. Please. ठीक है. Like rising up. Forceful. Sir, हाँ बोलो. isn't it like forceful and rising are same? नहीं, forceful again. Please. This is forceful. And rising is please. ठीक है, इस तरीके से जैसे बच्चा बोलता है ना कि मम्मी प्लीज टॉफी दिला दो, इट इज लाइक वो राइजिंग जाता है. एंड फोर्सफुली आप जबरदस्ती किसी से कर रहे हो, कि जैसे कि आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, प्लीज हेल्प मी. इट इज लाइक दैट यू फोर्सिंग समवन. बट एंड द सर थर्ड. प्लीज हम ऑलमोस्ट बैगिंग के लिए ही मांगते हैं, बोलते हैं. राइट.
तो सर इसमें मतलब हम न्यूट्रल या अथॉरिटेटिव हम कुछ भी लगाएंगे तो सेम ही साउंड करेगा सर, साउंड करेगा। नहीं बिल्कुल नहीं करेगा। लैगिंग ही करता है नहीं, बहुत ऑलमोस्ट। डिफरेंट है। नहीं, I'll teach you. देखो 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 देखो, I'll help you, I'll help you, I'll help you, I'll help you. See, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो by the word of, by the meaning of the word please, and उसके बाद इस शब्द के मतलब से आप इसकी परिभाषा अपने शब्दों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं सॉर्ट करता हूँ इसको। देखो, इसका सिंपल सा फंडा है, हमें जो हमारे सामने शब्द है, ठीक है, हमें उसे उस तरीके से नहीं करना है, कहना है जो उसका मतलब है, हमें उसे उस तरीके से कहना है जो कि उसका मूड है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब ब्रोकन इट डाउन फॉर यू। ठीक है, नहीं समझ में आया है मुझसे फिर पूछो, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? ये कंसेप्ट समझना जरूरी है बहुत। बताओ। सर मुझे हे में डिफरेंशिएट करना इजी लग रहा है, मतलब हे में मुझे पता चल रहा है, बट प्लीज में ऑनेस्टली जब आप भी बोल रहे हो मैं डिफरेंशिएट ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ। या सर ओके, शी इज राइट। ठीक है, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू कि ठीक है, प्लीज में देयर आर फ्यू टाइल्स ओवर हियर, जैसे कि आपका बेगिंग और प्लीडिंग में ऐसा हो जाता है। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, हम लोग विल नॉट वर्क ऑन प्लीडिंग। ठीक है, प्लीडिंग और बेगिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बेगिंग में जब हम किसी को प्लीज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मतलब रोने वाला एसेंट आ जाता है, लाइक थोड़ा सा ना, कि हाँ हाउ यू हाँ हाँ, दैट थिंग, दैट्स व्हाट सेइंग राइट प्लीज। राइट राइट राइट, चलो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि आई एम रॉन्ग हियर इन प्लीडिंग वाला। अब मेरे को ये बताओ, राइजिंग, फोर्सफुली, अथॉरिटेटिव में, एटलीस्ट इन तीन में मेरे को बताओ, क्या इसमें कोई डिफरेंस है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? सो मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि वही है ना, हम प्लीज तभी बोलते हैं जब हमें किसी से फेवर चाहिए होता है। हे में अथॉरिटी दिखती है, बट प्लीज में अगर आप अथॉरिटी दिखा रहे हो तो आप प्लीज का मतलब ही नहीं रह गया ना फिर तो। एग्जैक्टली exactly. और ये तो चीज आपको समझनी है। ठीक है, प्लीज का मतलब ही नहीं रह गया, राइट। हमें मतलब पे नहीं जाना है, हमें शब्द के मतलब पे नहीं जाना है, हमें उस शब्द से महसूस कैसा करना है, हमें वो कराना है। क्योंकि देयर विल बी, आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे जब एक हस्बैंड वाइफ लड़ाई करते हैं, प्लीज कैन यू डू दिस, ठीक है, इट कम्स आउट लाइक दिस अग्रेसिवली। ठीक है, वो भले ही प्लीज जो वर्ड है उसको हम वी generally use this word please as a gesture wherein we are requesting someone. It's a requesting word, but you are representing this word to show anger. You're forcing this word, you're using this word in a forceful manner. So these are tools na, basically, like please can you do this, मेरे को बताओ, where was I polite, where is the politeness in this? और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, please can you do this, please can you do this, please can बहुत you do this. क्या वंश, मुझे समझ नहीं आया। आई वाज सेइंग बहुत डिफरेंस है, जैसे आपने बोला ना, नहीं यू नहीं कैन वंश, ये आप see, I get that this is what has been understood by you, and I'm talking about these two artists that need to learn this. Please tell me, ऐसा आपको मतलब आपको इस क्लियर? बार मुझे लगा, मतलब डिफरेंस, लाइक फर्स्ट में मुझे अथॉरिटेटिव लग रहा था थोड़ा, लास्ट वाले में मुझे थोड़ा बेगिंग या प्लीडिंग सा लग रहा था, लाइक मैं उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही बेसिकली, बेगिंग और प्लीडिंग में। नहीं, वो मैंने हटा दिया, हमने प्लीडिंग हटा ही दिया, क्योंकि इन हाँ जी, दोनों तो वर्ड के लास्ट बीच में वाला ना ज्यादा बेगिंग। डिफरेंस नहीं है। बेगिंग और हाँ जी, तो प्लीडिंग, देखो लास्ट प्लीडिंग वाला होता है बेगिंग। वो अलग ही है। हाँ, ठीक क्या? है, या तो डू यू वांट टू ट्राई दिस नाउ सिंस यू हैव लर्नड इट? मे बी। ऑलराइट, ओके गो अहेड देन, गो अहेड, गो अहेड। ओके, सो मे बी अथॉरिटेटिव, प्लीज कैन यू डू दिस। देखो आपने प्लीज पे जोर डाला है, ठीक है, हम्म please was authoritative. I need, chalo please, I don't want you to pull it up in a sentence, I want you to emphasize on the word itself. अभी हम सिर्फ one word practice करेंगे, and then we'll get into statements. Not today, someday else, somebody, some other day. ओके ओके, प्लीज प्लीज Now देखो, दोनों प्लीज में ज्यादा डिफरेंस था नहीं, आपने सिर्फ आपका मूड वही था, आपने सिर्फ उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया था, ठीक है, ओके, द इमोशंस वर सेम। प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। प्लीज गो ऑन, प्लीज गो ऑन। सर ये अथॉरिटेटिव आप मतलब कोई सेंटेंस की फॉर्म में दे सकते हो कि मतलब इसका कहने का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ठीक है ठीक है ठीक है, तो लेट ओके, ये आपने, आपको ये बताओ मेरे को, आपको क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया है इसका? यस सर। आर यू क्लियर विद द कंसेप्ट, यस और नो?
Yes, sir. I'll ask 3 times. Are you clear with the concept? Yes or no? Yes, sir. Sure? Yes, so sir, but authoritative को बहुत confusing लग रहा है कि for example कि आ जैसे जाओ, example ठीक मिल है. जाने के बाद I'm coming to it. ये story पढ़ो एक बार. I've come down to statements now. And we'll apply this over here. Come on. ठीक है? What I need from you, I need you to go from here to here. बस इतना. ठीक है? पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें फिर आप फंबल करोगे कहाँ क्या जोड़ना है. ठीक है? या फिर इतना भी मत करो, मैं तो ज्यादा बोल दिया. आई एम सो सॉरी. इतना ही करो. चलो. सर मेरे को रीड करना है. आप ही को रीड करना है. In a village lived a carefree boy with his father. The boy's अच्छा. father. वेट. ये वॉइस मॉड्यूलेशन की क्लास चल रही है. रीडिंग क्लास नहीं चल रही है ये. ठीक है? So नाउ मतलब I was trying कि मैं modulation कर पाऊँ उस चीज का. I'll help you. I'll I help will you. after हाँ, this. please go on. Yes, please go on. Please go on. So मैं try करूँ, ठीक है? Please don't judge. नहीं, it is my job to judge. Please go on. Okay, sorry. In a village lived a carefree boy with his father. The boy's बस, father that's it. I don't want you guys to elongate. Elongate करोगे confuse जाओगे कि So आप can I सीख रहे हो try सिर्फ. once? Please. In a village lived a carefree boy with his father. Good. तीनों में से I liked yours. अब देखो what अब may I have your name one more time please? Ananya. Now, what is that one thing that Ananya is having? Ananya is having ठहराव, or what do you call this? Calmness. She is, उनका जो rate of speech है, that is accurate, what it needs to be. ठीक है? दूसरी चीज, she's pronouncing each and every word clearly. She's trying to modulate, but she's not able to get that exact intonation. Her word go. That is what is happening. I'll show you. In a village lived a carefree boy with his father. ठीक है, ये मैंने कहानी सुना दी आपको इस तरीके से. ठीक है, नाउ आई एम एक्चुअली इंटोनेटिंग एवरी वर्ड इन इट. विलेज हो गया. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैंने चलो केयर फ्री बॉय विथ हिज फादर. यहाँ पे फादर को मैंने इस तरीके से बोला, अपनेपन से बोला. फादर यहाँ पे अपनेपन से बोल दिया मैंने. ठीक है, विथ हिज वाज केयर फ्री के बाद में जब मैं केयर फ्री बॉय, और जब मैंने उठाया इसको विथ हिज फादर, or this is like a joining tone that I've given over here. A bit complicated for first day, but you will have to understand what respect, what level of delivery you need, what level of delivery you need to give to each, how do you need to pronounce each word. This is what I mean to say. ये चीज आती है यहाँ पे. Now, once try it one more time. In a village lived a हाँ, carefree ये boy. और धीरे और स्लो हो जाओ, और अपनी रेट ऑफ स्पीच को कम करो. Okay, sir. Wait. हाँ, I'm waiting. Mm. Take your time. In a village lived a carefree boy with his father. Sir, is that okay? You'll have to work harder on this. Oh, ठीक है, like कोई बात नहीं. or जो हाँ, please go on. in a village lived a carefree boy with his father. Good. Carefree boy and with his father was good. You need to work on your starting. Put a smile on your face. ठीक है, and then power it up. In a village, like be enthusiastic. हमने क्या पढ़ा था आगे, that you need to be enthusiastic, you need to be confident, you need to Sir. be happy. कहा था ना, देखो ये रही वो तब स्लाइड आपने मैंने बताई. स्टार्टिंग ऐसे करी ना, ऐसा लगा कि मैं सैड स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ. नहीं, sound enthusiastic. Always sound enthusiastic unless you're told not to. ठीक है. सर आपने जब एक्चुअली रीड करने को बोला ना, आई वाज लाइक कंफ्यूज कि एक्चुअली मेरे को करना क्या है, कि मेरे को लगा कि सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन पे कोई ही बात जाना नहीं, आप फिर कोशिश कर सकते हैं. प्लीज कीजिए एक बार और. सो इसी को रिपीट. हाँ, व्हाई नॉट. रिपीट. आपको देखो, रिपीट इसलिए बोलूंगी आपको कंटेंट पता है. अगर मैं आपको ये पूरा पढ़ने के लिए बोलूंगा, यू विल जंबल अप लाइक एनीथिंग. प्रॉब्लम ये है. चलो इसी को पढ़ो आप. इन अ विलेज लिव्ड अ केयरफ्री बॉय विद हिज फादर. दैट इज इनफ फॉर नाउ. In a village lived a carefree boy with his father. आई वॉन्ट यू टू फील वॉट यू सेइंग मोर डीपली. ठीक है, और जैसे इन अ विलेज के बाद में जो आपने गैप लिया,
जो it's like when you're thinking what to say ahead, और उसके लिए जो आपने break लिया, you'll have Yes, to sir. read your content one more time and then deliver it again. Okay, come on, one more time, let's do this. In a village lived a carefree boy with his father. And number two, you'll have to work on your pronunciation. ठीक है, the way you pronounce your words needs to be improved, then सर you'll मैं sound better. लास्ट टाइम, उसके बाद हम इसको हटाएंगे, ठीक है? ठीक है ब्रो, इसको हटाएंगे हम नो प्रॉब्लम इन द सेंस मतलब चलिए, इस टॉपिक को लाइक विल मूव फॉरवर्ड. हाँ हाँ मैं समझ गया मैं, प्लीज. In a village lived a carefree boy with his father. In a village can be improved. This time you didn't do better what you did last time. The ending was good. So Okay. actually, I have a doubt because if we are presenting it in a radio jockey session, then हम इसको और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं. लेकिन if we are reading simple, so I think so in a storytelling way it is fine. Storytelling way. Now let me, storytelling way, you'll have to make it jazzy. If you don't make it jazzy in a storytelling way, क्योंकि मैं जब छोटा था ना, वो जो आपके कैसेट्स जो रिकॉर्ड करते थे लोग स्टोरीज की, आई यूज टू लिसन टू अ लॉट ऑफ इट. मेरा जो पूरा जो चाइल्डहुड है वो उसी में निकला है पूरा का पूरा. बात ये है, पापा लाके दिया करते थे बिकॉज आई वॉज बेड रिटन फॉर गुड ओल्ड 3-4 years. आई वॉज ऑन द बेड ड्यू टू अ सर्जरी. तो मैं सिर्फ बेड पे लेटा लेटा वही सुनता रहता था और मैं कुछ नहीं करता था, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था. तो इफ यू टॉकिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग, तो इट इज लाइक in a village lived a carefree boy with his father. The boy's father told him that he was old enough to watch over the sheep while they graze in the fields. ठीक है, ये तो ये हो गया. अब इसको अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में अगर लेके आना है, I'll teach you how. In a village lived a carefree boy with his father. The boy's father told him he was old enough to watch over the sheep. देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं, इट इज ऑल अबाउट द इमोशंस. डिलीवरी सेम रहेगी. अगर आप मेरे को इसमें बोलोगे पॉज लेके बोलना है, आई शो यू हाउ. इन अ विलेज lived a carefree boy with his father. The boy's father told him that he was old enough to watch over the sheep while they graze in the fields. ठीक है, अभी इसमें ले आया मैं. अब इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ी कम कर दी है, इमोशंस वही रखे हैं, पॉज डाल दिए हैं. दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क. डिपेंड्स ऑन So व्हाट जॉनर यू गेटिंग इनटू. हाँ बोलो बोलो. सर एक्चुअली मतलब मैं जनरली ये क्वेश्चन सोचती हूँ मतलब या फिर मेरे को इसका आंसर मिल भी जाता है देन, बट मैं फिर भी ये क्वेश्चन बोलना चाहूंगी कि जैसे हम एंकर्स वगैरह को सुनते हैं, अब वो कहने को जर्नलिस्ट जो होता है कि वो बायस नहीं होता है किसी तरफ, और वो किसी रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है, देन कभी कभार वो ज्यादा ही फ्लो में हो जाते हैं. मैंने जो नोटिस किया है कि वो ज्यादा फ्लो में हो जाता है, देन वो उस वर्ड की जो क्वालिटी है, जो वर्ड अपने आप में जो मैटर करता है, वो चीज क्लियर नहीं हो पाती है. क्या वो चीज उसी के अंदर नीड नहीं होती कि, या फिर वो उनकी गलती है? See, this is a good question. I appreciate this. The thing is, it depends upon the subject matter. It depends upon या सर मुझे पता है ये situation. इससे बहुत अलग है क्वेश्चन, बट नहीं मैं घुमाऊंगा नहीं, मैं सीधा पॉइंट कर रहा हूँ. ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है. व्हाट इज द नीड ऑफ दैट आर्ट, व्हाट इज द अर्जेंसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, ये हो गया. कई बार मैं ये नहीं कहता कि आर्टिस्ट गलती नहीं करते, मैं भी गलती करता हूँ शो पे, ऐसा नहीं है कि तो आपकी आवाज अच्छा बहुत स्लो आ रही है. ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आई बी क्लियर अबाउट इट. द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि मैं गलती नहीं करता, ठीक है, या कोई और आर्टिस्ट गलती नहीं करता. हर कोई गलती करता है. द थिंग इज इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द आर. इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द आर में सिचुएशन आती है आपकी पॉसिबली. Then what comes down onto the thing is कि sometimes artists do it, sometimes it is not required. So this is something that cannot be judged into totality because ये ना एक आपका probability का question है. Might or might not be वाला में आ जाता है ये. ओके. All right, cool. So guys, we have come down to the end of it. ये promo making का है last. Okay, and you can probably see this. जो भी आपके प्रोमो का बेस्ट पार्ट है आप वो उसमें लगा सकते हो एंड कॉल टू एक्शन बोल सकते हो कि आप जो लोगों से चाहते हो करवाना, कहीं पे क्लिक करना या इस तरीके से. सो यू कैन डू दैट. सर टेल मी. बोलना चाहती हूँ कि जैसे अभी हम स्टूडेंट्स हैं, सो अभी Okay. स्टूडेंट की एज में हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसा कि मतलब इंटर्नशिप या फिर क्या कि हम लोग जिससे हमें प्रैक्टिस होती रहे.
यार देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इफ़ यू वांट टू गेट इनटू देखो, फिर आप इंटर्नशिप करो, पहले तो मैं ये बताऊंगा, ठीक है। एंड इंटर्नशिप के लिए भी यू नीड अ बेस, क्योंकि इंटर्नशिप तो ऐसे मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। यू मस्ट Yes, sir. शो योर कैलिबर। वो कैलिबर कैसे आएगा? यू हैव टू अपने बताओ हाउ टू गेट इंटर्नशिप। आई हेल्प यू राइट नाउ। पहले आपको क्या करना है कि अपना ना एक छोटी छोटी वॉइस क्लिप्स बना लो, पैकेज कर लो और उसे रेडियो स्टेशन से भेज दो। दिस इज द ओनली वे टू डू इट। खत्म। Okay. सर मैंने वॉइस मतलब सुने थे, जैसे आपको अगर आपने सीरीज देखी होगी 13 रीजन्स वाई, तो मैंने उसके जो एग्जैक्टली जो टेप्स थे मैंने वो सुने थे, लाइक वो बहुत मतलब उससे यू कैन रिलेट हर। समझ रहा हूँ मैं। सो नाउ दैट पर्सन हैज मेड अ रिलेटेबल कंटेंट। बात ये, एंड गाइस ट्रस्ट मी, आई विल हैव टू वाइंड अप द सेशन, अदरवाइज आई वुड हैव एंजॉयड टेकिंग दिस ऑल डे लॉन्ग। आई डोंट माइंड डूइंग दिस, ठीक है। यू गाइस कैन सर प्रॉब्ली कनेक्ट विद मी सर एंड हाँ, आवाज आ रही मेरी? सर एक डाउट है सर, वो क्लियर कर दो। बताओ। सर मेरे को ना कंफ्यूजन है कि सर डबिंग और वॉइस ओवर में सर डिफरेंस क्या है सर? मेरे को इस चीज की बहुत कंफ्यूजन है सर। यार वॉइस वॉइस को उसको ही डबिंग बोलते हैं और उसी को वॉइस ओवर बोलते हैं, क्योंकि देखो आई टेल यू, मेरे फ्रेंड्स हैं वो मूवीज की डबिंग करते रहते हैं और वो उसी को वॉइस ओवर ही बोलते हैं। तो ज्यादा फर्क नहीं है। वो डबिंग में बेसिकली कई बार क्या, जो डबिंग का जो रहता है वो रीजनल लैंग्वेजेस के उसमें आ जाता है कई बार, तो लोग उसको डबिंग बोलते हैं, उसने उस भाषा में उसको डब कर दिया। या हम लोग ये भी बोलते हैं कि हमने उसको उस भाषा में वॉइस ओवर दे दिया। सो दिस इज अ बेसिक लिंगो। बात ये है, तो इसके चक्कर में मत पड़ो आप। इट इज जस्ट वॉइस ओके ओवर बोलो, डबिंग बोलो, सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। थैंक यू एक्सक्यूज मी सर। सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट या वेलकम। सर, लाइक आई नो आप इस फील्ड में बहुत टाइम से हो, एंड ऑफ कोर्स आपको मुझसे ज़्यादा पता है, बट सर मतलब मैंने इसमें देखा है, लाइक मैं ना, मुझे भी पहले यही कंफ्यूजन था, देन आई गॉट टू नो दैट लोग इसे सेम बोलते हैं, बट ये दोनों सेम नहीं होते। ओके। मतलब डबिंग इज डिफरेंट, एंड मतलब आप जो कार्टून्स में देख रहे हो या मूवीज में देख रहे हो वो वॉइस ओवर नहीं है, वो डबिंग है। लाइक एनिमेशन में वॉइस ओवर नहीं है, वो डबिंग है। बट जो आप न्यूज में देखते हो वो वॉइस ओवर है, क्योंकि जब आप वॉइस ओवर देते हो, लाइक ऑफ कोर्स अगेन आपको मुझसे ज्यादा पता है इसमें, नहीं नहीं मैं नहीं नहीं बस नहीं, ठीक है, नहीं, मुझे सीखने को मिल रहा है यार, प्लीज। आई टेल यू, आई एम डबिंग इनटू में पॉडकास्टिंग। बात ये है, आई एम नॉट डबिंग में इनटू दिस सर एक ना करियर। एक्टिंग इफेक्ट आ जाता है, एक एक्टिंग पिंच आता है। बट जो वॉइस ओवर है वो बेसिकली स्क्रिप्ट रीड करना होता है। लाइक काफी उसमें होता है कि जैसे आप फेसबुक वगैरह पे देखते हो, जो लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह लॉन्च करते हैं जिनको जरूरत होती है, वो वॉइस ओवर लिखते हैं, और कितने लोग डबिंग के लिए लिखते हैं। तो बोथ आर डिफरेंट। डबिंग के लिए उनको चाहिए जिनको थोड़ी एक्टिंग स्किल्स भी हो, उनके वॉइस में एक्टिंग पता चले। ऑन दी अदर हैंड वॉइस ओवर्स के लिए, जैसे आप यूट्यूब के लिए आपके पास स्क्रिप्ट है और आपको उसके लिए वॉइस ओवर चाहिए, कि हम जैसे वो दे रहे हैं, मतलब हम आपको स्क्रिप्ट दे रहे हैं, हमें उसके लिए एक अच्छी वॉइस चाहिए। Okay. See, the thing is, like I'll tell you, like I am into voice acting, ठीक है। तो मेरे को जब भी काम आता है, दे टेल मी कि प्रतीक, ये क्लिप है, you'll have to इस पे वॉइस ओवर कर दे तू। मेरे को स्क्रिप्ट मिल जाती है एंड देन मैं अकॉर्डिंगली डायलॉग्स बोल देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वो किसी दूसरी लैंग्वेज में होता है, ठीक है। मेरे को स्क्रिप्ट मिल जाती है, मैं उसको हटा के वो लगा देता हूँ, मेरे को फिर भी वो वॉइस ओवर बोलते हैं। तो दिस इज द थिंग हाउ दिस वर्क्स इन द मीडिया। बट ठीक है, व्हाट यू आर सेइंग आई आल्सो एग्री विद दैट, बट दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड एंड दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड। सो ठीक है, देयर कुड बी अ बिट ऑफ डिसिमिलैरिटीज, बट ओके, इट्स ओके, आई डोंट सर। माइंड। सर लास्ट मतलब जहाँ तक आपने मेरे से पता इंटरेक्ट करा, जो भी बात बात हुई, तो मतलब उससे रिव्यू क्या, लाइक शुड आई गो इन आरजे और एंकरिंग और ग्राउंड रिपोर्टिंग समथिंग? That is something which you will have to explore on your own, because if you do not explore that, you'll never be able to know that. बात ये है, अगर मैं आपको ये बोल दूं just based on a session which is probably an hour or 1 hour, 1.5 hour, कि this can be done, तो ऐसे नहीं होता, because there's a lot of hard work into it. You have to work persistently। कम से कम आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। I'll tell you, जब मैं रेडियो में घुसा था, I consistently worked 6 months in a row to get my first internship with Red FM। बात ये, and that too being a law student। I just spent, मैं रोज सुबह 11 बजे रेडियो जाता था, and I used to make sure that I record something every day, like every day। तब जाके वो बात बन जाएगी आपकी। If you can do that thing, just need to commit yourself। Okay. So it was lovely meeting you, sir. Thank you so much. Most welcome, and likewise, thank you। Bye, sir. हेलो, Bye। Thank you Yeah, so much, sir. थैंक यू most सर। welcome, most welcome, most welcome। हेलो सर, मुझे कुछ पूछना है बस।
तो हाँ जी, प्लीज छोटा पूछिए सर। प्लीज प्लीज सर प्लीज। मुझे पूछना है कि ठीक है हमने ये सब सीख लिया, अब इसको मतलब हमें शुरुआत करने के लिए हमें कैसे, लाइक मुझे किसी को अपनी वॉइस देनी है तो मैं चाहती हूँ कि एकदम क्लियर जाए। मैंने जैसे कहा कि सांस आती है बीच में, देन समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ इंटरप्ट करता है, बट हम धीरे धीरे उसमें तो हम फोकस कर लेंगे, बट और भी चीजें होती हैं सर जो बहुत मतलब अच्छी नहीं लगती ना वॉइस में। हाँ मैं राइट, चाहती आई हूँ सी कि दैट। हम सामने वाले को एकदम क्लियर वॉइस दे ताकि वो एक ही बारी में सुने एंड देन वो बोले कि हाँ ओके हमें इसकी आवाज चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कुछ ये मैंने ना सॉल्यूशन। स्टेज, ये मैंने ना स्टेज सॉरी, ये स्क्रीन पे एक नाम लिखा है, कैम्टेशिया। ये वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओके अभी मैं सर। चला के नहीं दिखाऊंगा, इसको डाउनलोड करना है, इससे आप ऑडियो एडिट कर सकते हैं। एंड डॉल्बी ऑडियो करके एक वो है software. I'll help you with that. You can connect me on these platforms. You have all of them, Instagram and my number and everything. You can WhatsApp me, whatever is convenient with you. तो उसके ओके बाद में मैं आपको उसकी जो भी कीज है वो भेज दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। एंड आई आल्सो हेल्प यू विद द एडिटिंग पार्ट एज वेल। आई डोंट माइंड हेल्पिंग यू विद दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच मोस्ट सर, वेलकम, थैंक मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। All right, guys, thank you so much for making this session interactive, and thank you so much. And I hope that you guys would have picked at least 2 or 3 things today. Thank you, यस thank you, सर। thank you. Invite Mayank for his vote of thanks. Thank you, Dr. Nivedita, for giving me this opportunity to give vote of thanks. I would like to thank Dr. Ajay Kumar, Director of Tecnia Institute of Advanced Studies, for his motivating words and to grace the occasion by his beginning presence. I would also like to extend my gratitude to Professor M.N. Jha, Dean TIAS, for guiding us for the successful organization of the webinar. We are also thankful to you, sir, for your insightful words on this subject. I would like to give my sincere thanks and appreciation to Mr. Prateek Yadav, podcaster and celebrity interview, Jagran Media, for taking his busy time out and sharing wisdom and experience with us. I am sure, sir, your words of wisdom must have enlightened the student. I would like to thank the HOD Department of Journalism and Mass Communication and other faculty members for their support. A special thanks to Dr. Nivedita. Last but not the least, thanks to all the students for participating in the webinar and making it successful. Thank you so much, sir. Thank you so much, Pradeep, sir. Thank you, sir. स्पेशली Thank you. फ्रैंकली मुझे आज ऐसा लगा कि बहुत टाइम बाद बच्चों ने इतने सारे क्वेश्चंस और दिल से पूछे होंगे। सेशंस तो खत्म ही नहीं हो रहा था, चले ही जा रहा था, बट मैं बच्चों से ये प्रॉमिस करता हूँ जितने बच्चे अभी हैं कि हम सर को दोबारा इनवाइट करेंगे डेफिनेटली। सीरियसली प्रतीक सर, बहुत फ्रूटफुल सेशन था, मुझे खुद भी काफी कुछ चीजें नहीं पता चली। बहुत अच्छा लगा हमारे को आपसे बात करके, आपको मिलके सर, और डेफिनेटली मुझे लगता है बच्चों को भी काफी अच्छा लगा होगा। जब बच्चों के लिए जो सेशन है बच्चों को अच्छा लगा तो सर हमें अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर अगेन प्रतीक सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। Thank you so much. It was indeed lots of information, lots of Thank you. experience, and the way you have talked to the student, that was very encouraging. And I'm sure that today's deliberation has definitely lots of takeaways for the students. And as Mike was saying, definitely we are going to organize more such sessions wherein I will be requesting you to act as a resource person and to guide my students. And the way, especially Vansh, Ananya, Unme, and then there was another Sanjana. I mean, the way they have asked the question, I'm sure that they have utilized the session to the fullest. Not only them, there must be a number of students who might have tried to ask something, but because of the question answer session, they might have got their answers. So it was indeed very interactive session, and it was our pleasure to have you on this platform. Thank you so much. Hope to meet you soon on any other such event, maybe of a physical or the virtual one. And with this, I'm just about to sign it off. Students, we have already shared a feedback form to you. Kindly fill that form. Your feedback is very valuable to us. And at the same time, I'm just signing it off. Thank you so much, Pratik. It was indeed pleasure meeting you on this platform. And indeed, you are very young with lots of experience. We just enjoyed your deliberation. Thank you so much, students. Now I'm just signing off. So till we meet next time, it is bye bye. Thank you so much.
And stay Uh, happy, be blessed, love your mom and dad. Thank you so much. Bye, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, sir. Bye.